नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन पर, खासकर बच्चों के इम्यूनाइजेशन पर, क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट XE अब स्कूलों में पहुंच गया है। पहली बार बड़ी संख्या में छोटे बच्चे कोविड संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहस छिड़ गई है और तेज हो गई है, क्योंकि वे मानते थे कि बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इसलिए कोविड संक्रमण बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन XE वेरिएंट ने डॉक्टरों को दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं कि आखिर वे करें तो करें क्या। टीचर्स परेशान हैं कि वे बच्चों को संक्रमण से कैसे दूर रखें। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अब बच्चों और इन्फेंट्स को भी कोविड वैक्सीन लगाने का समय आ गया है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और वेलनेस एक्सपर्ट से। हमारा ये कार्यक्रम अगले 3 घंटे तक YouTube और Facebook पर लाइव रहेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शुरू करें अपने एक्सपर्ट से बातचीत। तो पहले हम देखते हैं ये राउंड अप वीडियो। Namaskar and welcome to yet another episode of Health4All, the 27th episode. And today we are dealing with a very, very stormy group, the adolescents. Now, first we need to understand that what is adolescent. Okay? क्या होता है जब बच्चे प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, तो उस स्टेज को हम adolescence कहते हैं. You automatically understand looking at the child itself that the child is entering. You need not know the age. You will see the child and you will tell that this is okay, this is a child and this child is adolescent. Okay, you will see the child. Now what is the difference? Your body start becoming different as you enter adolescence. Okay, children, as the girls, they start developing breast. They start having periods, they start growing taller, okay? And boys, they also start growing taller, their voice become little harsh. You will see them turning from cute kids to children with pimples and skin issues all over. So that is what adolescence is. अगर आपके घर में एक एडोलेसेंट बच्चा है, तो हमेशा याद रखिए कि वो बंडल ऑफ एनर्जी है. ओके, इतनी एनर्जी है उसके अंदर, प्लस उसका माइंड भी एक्टिवेट हो रहा है हर एक जगह पे. उसको धीरे धीरे कुछ आ गई है. लाइक इफ यू वॉच अ फिल्म विद अ चाइल्ड हु इज लाइक 6 years, and even if it is adult film, and the child will not actually get anything out of it. They will not understand anything. But now the same movie, if you sit with a 13-year-old, 14-year-old child, they will absorb every single thing. So first and foremost is you have to channelize that energy. Okay? Because if you don't channelize that energy, the child may get lot of emotional stress, distress, depression,
and those issues, childhood issues, which may stay forever. See, if a trauma happens to us when we were small, we can let go very easily. It goes from our mind very easily. But the same trauma, when happens in adolescence, it does not go. It forms the root of our whole life. Okay, so it's very important that the root has to be strong. First, physically; second, mentally; and third, spiritually. Okay, Brahmani Pranayam helps you de-stress yourself in just 7 to 8 breaths. Okay. So it is very important that the child every morning does Brahmani Pranayam, where they put 2 fingers in between the eyes, one down the nostril, one down the lips, thumb closing your earlobe. Take a normal deep breath in and breathe out. Breathe in Brahmari. I've just taken 2 breaths and I already feel meditative. So Brahmari is because they're bubbling in energy, they are restless. Okay, in that case, this calms them down. This brings peace into them. This makes them so they are still energetic but static. They are not doing this. और अब वक्त है योर हेल्थ काउंटर का, जिसका विषय है प्रायोरिटाइजिंग एडोलेसेंट हेल्थ इन पोस्ट कोविड टाइम्स। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमा दिवाकर। डॉक्टर हेमा इंडिया की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट में से हैं, जो बेंगलुरु के दिवाकर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। देश विदेश में इनका बड़ा स्थान है। वह ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फेडरेशन की अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर हेमा दिवाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हैं, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। मिस्टर शंकर बात करेंगे हेमा दिवाकर जी से। मिस्टर आर शंकर हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनका जर्नलिज्म में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वे अब तक हेल्थ राइटर्स के 200 वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशंस का आयोजन पिछले 5 साल में कर चुके हैं। मिस्टर शंकर कर्नाटका और केरला से प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं। So my first question would be, can you distinguish the health issues in adolescents before COVID, during COVID, and after COVID? What are the differences that adolescents went through this critical phase of 2 years? When we say post-COVID, I think a lot of things that were always existing and always needed our attention were in the backyard, and the COVID has bought it and slammed it on our face, so to say. So we recognize the importance of so many things that we ought to have done at the appropriate times, because for adolescents, as the adage goes, you reap as you sow. So you sow the seeds of good health in them, preventive care in them, then they grow up into fine, healthy individuals, which make a healthy country. So the pre and post-COVID has allowed us to make this distinction of really recognizing the importance of health as well. And to my mind, the 5-point program that we always ought to have initiated for the adolescents, catch them young, that is actually the mantra. So the 5 things, one which COVID has brought to the forefront is for all age groups about nutrition and building up your immunity. So the right nutrition, especially in the adolescents, in the growing up years, avoiding anemia and stunted growth, that's one of the prime crucial things. The second is, Pooja ji was just mentioning now about the yoga and the relation to the obesity and the non-communicable diseases like diabetes, etc. So the lifestyle
changes, inculcation of the habit of exercise and doing away with the sedentary life pattern and diminishing the incidence of obesity. That's the second important thing. The third thing is, for girls, what happens, especially in adolescence, is the onset of menstruation. Of course, the other secondary sexual changes do happen and happens by default, but one thing that strikes everybody's eyes is the menstruation. So menstrual health and hygiene forms the third important prong. And the fourth is all about vaccines. COVID has brought the vaccine to the forefront, which has made us reflect, well, there are many other vaccines beyond the COVID vaccines, which our adolescents should have got, especially the girls with respect to cancer cervix, the HPV vaccines, etc. So more attention and more focus is now getting onto that. The life skills and the awareness about sexuality, the sexual behavior, contraception, and mental health. So these 5 points, if you really focus, pay attention, do something to make an impact. We now move on to the next session, session 3, another important session on prioritizing adolescent health in post-COVID times. Where does all this adolescent group form? Are they into pediatric section, or are they go to GPs, or do you have speciality taking care of adolescent health, and what is the experience in the West, Dr. Neelam? So now these days, since adolescent doesn't earn, there is a lot of a new wave I'm seeing. I'm sitting in an area where I see mostly open-minded parents here. So at Gangaram, I receive a lot of patients coming with their kids and say the kids was asking for a session from a long time. They demanded, I don't know what is the issue. Do you think there is an issue? Because it's difficult for a parent who has a gap in the children and the adulthood. बहुत गैप है उनके बीच में, समझने में उन्हें बहुत समय लगता है कि अच्छा बच्चे को कोई परेशानी भी हो सकती है जिसके लिए उसको मदद चाहिए. अच्छा मदद क्यों चाहिए? ऐसी क्या बात है जो हमसे नहीं कर सकता है, जिसके लिए उसको किसी और से बात करनी है? मुझे आज भी एक केस याद है. एक बच्चा मेरे पास सीवियर डिप्रेशन के साथ 3 सेशंस के लिए आया. 3rd सेशन में जब उसका असेसमेंट हमने किया तो उसको सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन डिटेक्ट हुआ. द गर्ल वाज 17 इयर्स ओल्ड. मैंने उसके पेरेंट्स को तब बुलाया उसके बाद कि अब ये मैं तुम्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू सी योर पेरेंट्स नाउ. मदर आई, इंस्टेड शी शुड बी इन अ सपोर्ट कि चलो ठीक है कुछ डायग्नोसिस हुआ है. शी गॉट ऑफेंडेड कि मेरा बच्चा मेरे से पहले आपके पास कैसे आ गया. So parents are not ready to give that space also to the kids. Now अगर आप घर में ही एक common space उन्हें दे देंगे जहाँ वो अपने मन की बात कर सकें, and as Dr. Sonia said, don't judge and understand their perspective that they are undergoing this, probably will help them out. So for the adolescents, help starts from the home with the parents. Rather they visit their friends, their other peers and take a wrong advice. Rather they should visit the parents. So parents has to give a common space to the kids where they actually come up, speak to them what issues they have and get right help instead of getting wrong help from the peers. Who actually looks after the problems of adolescents, because they are a very, very strange, confused group and they have major issues mentally. See, it is very sad. आप हमारे पुरानी पिक्चर्स में जैसे देखते होंगे ना कि वो फैमिली फिजिशियन का जो कॉन्सेप्ट था कि एक बुड्ढे से डॉक्टर आते थे अपना स्टेथोस्कोप लेके, वो एल्डरली से लेके और बच्चों तक सबको मैनेज करते थे, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारा ना चला गया है. और अभी अनफॉर्चुनेटली ऑल द डॉक्टर्स जो है ना, जैसे they have become very professional. वो टच जो है ना, that is actually gone. मेरे केस में क्या है, as you know, I'm in Gangaram, I'm heading one of the departments. हमारे केस में ये होता है कि सब तरह के लोग आते हैं, बुड्ढों से लेके बच्चों तक. And in fact we are very lucky कि वो हम लोगों के व्यवहार से क्या होता है कि एक ओल्ड सीनियर सिटीजन आएंगे, वो अपने बच्चों को भी ले आएंगे, फिर वो अपने बच्चों को ले आएंगे कि मैडम आप हमें सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए. Then we, as you rightly said, कि वो बच्चे कहाँ जाएं, they are confused, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता कई बारी. We have people who are actually looking after adolescent health, who are actually pediatricians by profession, but they have actually super specialized into only adolescents. We have certain people in Gangaram Hospital
who are actually going to these schools and talking only to the 9 to 11th year students, you know. ये जो मूड स्विंग होता है खास करके लड़कियों में पीरियड के दौरान, ये बहुत कॉमन है या ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, सिम्टम हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ये मूड स्विंग्स होते हैं. ये सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के टाइम की वजह से होते हैं. उस स्पेशली बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि पीरियड से पहले इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, रोना आता है या गुस्सा आता है. सो इट्स वेरी वेरी कॉमन. देयर इज नथिंग दैट इज there is nothing that one has to really worry about until one feels कि it is unmanageable और बिल्कुल भी इमोशंस को होल्ड करने की क्षमता नहीं रहती है. और अगर ऐसा है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ कि आपको ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट हैं या जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये आपके पीरियड से कितने दिन पहले आता है और इसको मैनेज करना विद अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग के माध्यम से बहुत जरूरी है. Often you deal with periods and painful periods and other things. So often patients suffer from painful periods, heavy bleeding, pain during sex, painful urination and defecation and nausea. Women often tolerate such excruciatingly painful period cramps because they are told that pain is normal. However, the period pain might indicate a more severe condition if it interferes with one's daily routine. A common cause of such very painful period cramps could be endometriosis. So what is your experience when you worked among the communities? So when I worked among the communities, I would want to talk about one of the government's flagship program, which kind of tackles these problems, adolescent problem, is RKSK program, right? Rashtriya Kishore Swasth Karyakram program. So I think this program has been, it hasn't flown to the level that it should have, but it has been instrumental in some aspects of changing the dynamics of adolescent health. Coming to your point, like how has been my experience of working in rural communities. So I think when we talk about menstrual cramps, it comes after we are aware that we can talk about menstruation, right? So it's a next step. It's a next step forward. But when we go to rural spaces, rural India, women are not even talking about their menstruation. They are making it so what they would do is even they would burn the sanitary napkin. They would clean the sanitary napkin and burn it so that the other members of the community do not get to know that they are on their periods. So the first step of talking about menstruation is also not happening. So this comes way after that. So also when I used to go to schools and talk to adolescents, one major problem that they had with their periods is, as I think Sonia ma'am already spoke about it, that how there is heavy flow happening, or someone is getting their periods in 6th standard, someone is getting their periods in 9th standard, and there is a lot of pressure that builds up also in school, that and not only pressure of getting periods in the right time, but also what products that they are using. So I think all of those things play a very significant role.
वेलकम बैक। और अब वक्त है योगा का। योगा सेशन अब से 9 बजे तक हम आपको दिखाएंगे योगा सेशन। और आज का टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं, और इसका डेमो देखने के लिए हम चलेंगे मिस महाती विस्पुते के पास। उनके बारे में बता दूं आपको कि वो जानी मानी योगा ट्रेनर और थेरेपिस्ट हैं। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका। आप हमारे शो में बराबर उनको देखते होंगे। आरोग्य फिजियोथेरेपी मेडेक्स हॉस्पिटल बेंगलुरु से वो जुड़ी हुई हैं। महाती जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपके पास 9 बजे तक का समय है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मेडिटेशन और बाकी चीजें कैसे आप बताना चाहती हैं। जी, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है मेडिटेशन। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितने बार हमने कितनी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों ने हमें बताया होगा कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, बहुत अच्छा लगेगा, सब अच्छा हो जाएगा। इट इज राइट, इट इज नॉट रॉन्ग। हाँ, सही बात है। मेडिटेशन काफी हद तक काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, विच इज ट्रू। लेकिन ये भी सच है कि मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोगों ने मेडिटेशन ट्राई करा होगा और मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब एक्चुअली डिफिकल्ट से ज्यादा ना काफी बार हमें तो बोरिंग लगता, इतना बोरिंग होता है कि हम करते ही नहीं है, या फिर इतना डिफिकल्ट होता है कि हमने उतना ट्राई नहीं करा। जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स और साइंस की प्रॉब्लम्स होते हैं उसे भी वक्त लगता है कि यू हैव टू गिव इट टाइम। और मेडिटेशन का ये भी है कि आपको कोई मेडिटेशन सिखा नहीं सकता। सो इवन टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी कि कैसे करना है, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न मेडिटेशन फ्रॉम समवन एल्स। ओके, जैसे अगर आपको स्विमिंग करना है ना, आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे। सो मे बी यू हैव लर्न स्विमिंग, कि आपने पढ़ा है स्विमिंग कैसे है करना है, शायद आपके पास ट्रेनर है जो आपको सिखाएगा या सिखाएगी कि स्विमिंग कैसे करनी है, लेकिन सीखना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है, राइट? सो मेडिटेशन इज लाइक दैट, यू हैव टू ट्राई। देखिए, पढ़ के देखिए या फिर बिना पढ़ के देखिए, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नो क्लू दैट दे आर एक्चुअली मेडिटेटिंग। ओके, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन। या एंड सो मेडिटेशन सिखाने से ज्यादा व्हाट आई विल टीच यू टुडे इज मेडिटेशन में जाते कैसे है। ओके, इट्स अ ट्रैप। ओके, जैसे अगर आप सोने जाओ ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप दिमाग में क्या सोचते हो? नींद आ रही है, थोड़ी नींद आ रही है, अब नींद आ गई है। यू हैव टू, इट हैपेंस नो समटाइम्स कि आपको 1-2 बार बोलना पड़ता है और खुद से नींद आ जाती है, लाइक यू डोंट रियलाइज इट्स हैपेंड। मेडिटेशन इज लाइक दैट। या यू हैव टू सेट द ट्रैप फॉर योर माइंड और उसके अंदर फिर जाओ, एंड देन यू विल बी मेडिटेटिंग ऑन योर ओन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा। It's actually a nature of humans to be able to meditate, but it's hard to find that nature. It's somewhere deep inside you. It takes time. Yeah, so what we are going to do is we're going to find methods which we already do and then see how those methods can move to meditation. Okay, पहला तो हम देखेंगे जो है योगासना। Okay. Okay, no, 1 second, wait. मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाऊंगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, फोकस्ड मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, मंत्रा, ट्रांसेंडल, प्रोग्रेसिव, लविंग काइंडनेस, विजुअलाइजेशन। इंटरनेट पे देखो 50 से ज्यादा मेडिटेशन के टाइप्स आपको आराम से पहले सर्च में ही मिल जाएंगे। नाउ दैट those are types of meditations you can try, definitely. Okay, but you have to find ways to do it
ऑन योर ओन. ओके, आप चाहिए तो सारे ट्राई कर लो, देखो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ओके, मैं वो वाली मेडिटेशंस नहीं सिखाने वाली हूँ अभी. ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू कि जो हम नॉर्मली योगा क्लास या फिर योगा प्रैक्टिस करते वक्त जो करते हैं उसी से हम मेडिटेशन में कैसे जाएं. ओके, विल स्टार्ट ऑफ विथ, जैसे अगर आप योगा कर रहे हो हर रोज, व्हाट डू यू डू? योगासना. डेफिनेटली आप आसन करने ही वाले. कि वेरी इंपॉर्टेंट दैट आसना में आप सिर्फ अलाइनमेंट और बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी ही ना करो. नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, what we're going to do is you already have to be very fit. You need practice. Fit मतलब ये नहीं कि आप perfectly fit. Fit मतलब आपको वो आसना आना चाहिए, आपके लिए वो आसना easy होना चाहिए. Okay, so first you should know the asana. Alignment आपको practice करते रहना है. आसनाओं में जैसे आजकल होता है ना आसना फ्लो, कि आप एक आसना से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, ऐसे सारे आसना एक साथ करते हैं. Then you come back to the first step, that is right side. Then you do the same thing all over again, left side. There are these asana flows that you can do. It's a very fancy term for, जैसे अगर आप हर रोज आसना करते हैं तो आपको आदत है कि आप इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे. Now you're trying to do all of them in a flow. आराम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, you have to keep doing. Now you realize you'll need practice for that, right? So you have to perfect that. Now moving to the next step, you will not play background music. Okay, you will not do this along with doing something else. काफी लोग क्या करते हैं, फोन पे इंस्टाग्राम रील्स लगा दिए and they're doing their exercise or yogas. Not that. You have to be doing it on your own. You have to breathe correctly. Okay, जैसे मतलब normally हम सांस लेते breathe in, breathe out, वैसे ही breathe in, breathe out में आपको वही आसना करते रहने हैं. And soon you will realize you will be so focused on your own body and your own breath that you will slowly fall into a meditative state. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही मेडिटेशन है. It's a meditative state. You will become more patient to be able to do meditation later. Okay, इसे अगर आप देखो तो this will fall under movement meditation. क्या मूवमेंट करते करते आप मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अपने खुद पे है, only on your body and your breath. Now, so this is the first one. Yeah, and for this, what is most important is one, practice, and two, breathing. Okay, हर एक आसन के लिए there is a specific breathing that you have to know. You have to get it correctly. Okay, और ठीक है, कई बार ये होता है कि आप नहीं आता, या फिर you know some asanas are difficult. सांस फूल जाएगी, you are tired. That is okay. That's fine. That's a pause in your meditation. But you should just continue and be aware of your own body. Yeah, so this is the first one, which will fall under movement meditation. ये सारे नाम तो मतलब अलग ही है, but like you don't have to know the names, honestly. हाँ, आप योगासना करेक्टली अगर करेंगे अलाइनमेंट और ब्रीदिंग के साथ, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. एक्चुअली इसका एग्जांपल अगर ऐसे देना तो इमेजिन अगर आप कहीं वॉक पे गए हो, ओके, लंबा सा वॉक है, और उसके बीच का मतलब कुछ, इसके बीच में कुछ ऐसे पल होते कि यू विल फॉरगेट वेयर यू वर, कि आपको बाद में याद ही नहीं रहेगा, अरे वक्त जल्दी गुजर गया. और समथिंग एज सिंपल एज मतलब रोटी बना रहे हो, ओके, आप आखिरी रोटी पे आ जाते हो, एंड यू रियलाइज अरे आज जल्दी हो गया, बिकॉज यू वर सो लॉस्ट इन द प्रोसेस. या नॉर्मली अगर कोई ऐसे आसान सा काम हो जो आप रिपीट कर रहे हो, then that'll be the right one for you, right? So this
any form of movement that you do along with correct breathing and you're aware of your body, which will be one form of meditation. ठीक है, अगला जो मैं बताऊंगी वो है ब्रीदिंग. जैसे आप योगा क्लास में क्या करोगे, आप योगा कर रहे हो फिर आप ब्रीदिंग कर रहे हो. So you're moving to the second one, breathing. Now breathing has two types of breathing. जो इस समय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इन दो टाइप्स में आप जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको पता है उन्हें डिवाइड करिए. एक होगा जो आपको पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करता है. It activates your body for the rest of the day. There is another one which will calm your body and help you to go into meditation. That's the second one. So, if you obviously you realize the second one is what we're going to focus on. It is more calming. It is going to make you patient. आपको meditation में जाने के लिए वो मदद करेगा. ठीक है. So a few examples will be अनुलोम विलोम. Definitely. Okay. आपको it is going to balance both sides or both hemispheres of your body. Okay. दोनों नाड़ियों को वो balance करेगा. It is very good to first balance and then move to meditation. Yeah, that is first one. Second one will be, I think, Brahmari pranayam. Okay, or humming bee sound. Humming bee sound makes sense. Okay, अगर आप humming bee थोड़ा breathing exercise करो, humming bee sound, and then you move to meditation, it will be great. Okay, आपको already vibrations feel हो रहे हैं आपके आजू बाजू, then you can move to meditation. A third one, which is very commonly accepted across the world. Okay, it is 4-7-8 breathing. You breathe in for 4 count, hold for 7 count, breathe out for 8 count. So you do breathe in 2, 3, 4, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2. So you continue with this. Yeah, you realize all of these are the ones where your breath is calming down, where you are calming down. Yeah, you're going to be, ऐसे तो काफी सारे breathing exercises है which you can do. Okay, you will know more. Okay, आप अगर आप practice करते हो आपको बहुत सारे पता होंगे. Know which ones activate your body or make you hyper, make you ready for the day. And there are other ones which will calm you down. The calming downs are the ones you will do. Ideally, like if you do asanas, let's say you're doing movement meditation, then you sit down, you do 1 or 2 breathing exercises, aram se. Then you just sit down quietly for some time and fall into meditation. आप थोड़ी थके भी होंगे, it will be very easy to do it. Yeah, so second one will be breathing exercises that you can try to fall into meditation. Now the third one is something that we have all done. Okay, मतलब इंडिया में तो हम बहुत ही करते हैं, हमें पता नहीं, मतलब हम इसे meditation की method अब समझते नहीं है. Like in modern times, all of this we do not expect it to be a form of meditation. Okay, ये है japa और mantra. Okay, actually japa and mantra are 2 different things. I'm just putting it in one category. Okay, japa is when you recite something. Okay, you have to repeat something. So jap karna वो होता. And japa you can do either with a japmala or you can count on your own fingers. Okay, there is a specific method to count. Okay, 1-2 methods है जो आपको correctly follow करने हैं जप करने के लिए. And mantra is also the same. Mantra we use the word very loosely. कि क्या ये this is mantra, वो mantra है, अलग-अलग mantra है. But mantra specifically is man, matlab mind, that we understand. Tra is a tool or an instrument
ओके तो आपके मन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ये. Okay, so depending on the mantra, that tool will work for your mind. Yeah, so very common mantras will be Om 3 times. Yeah, actually, I wouldn't say more than 3 times we should do, but there are some who do it more than 3 times. Om Namah Shivaya, Om Shanti Shanti. इतने सारे मंत्र है. Actually, I was looking for japa and mantra today morning कि मतलब आपको बता सकूं कि ये कुछ मंत्र है जो बहुत अच्छे हैं या फिर आप ये मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं. But there are mantras from different countries also. तो ये मंत्रा जपा कोई religious चीज नहीं है और every religion already has a mantra japa. So from your whatever you believe in, whoever you believe in, you can choose a mantra or japa for yourself. क्योंकि ये मंत्र है आपके मन के लिए, it has to work correctly. So you can choose which mantra you want to follow and then you can recite it. Japa, like I was saying, japa is specific. Like there are rules for japa. You have to know how to count for japa. जपा के लिए हम काफी बार रुद्राक्ष माला यूज करते हैं या फिर कुछ और भी होंगे, बट लाइक इट्स नॉट लाइक यू विल पिक अप एनी नेकलेस की माला एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग, राइट? सो जपा इज वेरी स्पेसिफिक. यू हैव टू लर्न बिफोर यू स्टार्ट जपा. या यू शुड learn and understand the methods and then do it, only to give respect to that sort of a knowledge. वैसे नहीं करेंगे तो बहुत कुछ खराब होगा और उस आपके ऊपर कुछ होगा, ऐसे नहीं है. But it's a form of knowledge. It is best to know the knowledge and then do it. जब आगे आपको और बताऊंगी, जैसे because we are trying to move towards meditation, japa has 5 types. Okay, first one, मैं कई बार मतलब हमारे नाना नानी ने कराया होगा, आपको लिख के जप करना है. जैसे मतलब मुझसे दिखाया गया जाता था जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, लिखते जाओ, डायरी भरो. ओके, दैट इज one form of japa. That is for people who cannot sit and meditate, sit और मतलब बैठ के जप करना बहुत कठिन होता है, उनके लिए लिखाया जाता. So the first step, actually, that just if you follow the steps, you will flow into it very easily. So the first one will be to write. Okay, लिखित जपा. Agla, you will have to orally say the japa. That is vachika japa. Yeah, so you say the mantra or the japa out loudly. That is the second one. The third one, upamshu japa. Okay, upamshu japa. So in this one, what you do is you start whispering the japa. You're not saying it out loudly, you just whisper. तो मतलब आप सिर्फ मुंह हिला रहे. Okay, that is all you do. Then you move on to manasika japa, which is you start saying the mantra in your head. And the last one, ajapa japa. Okay, which means there is an absence of japa in your head. You realize that level that we have, that we're increasing. You start with writing, you say it out loudly, you start whispering it, you start saying it in your mind. Then maybe you don't say it. Yeah, you're going to move into that state. Yeah, you will have that feeling around you, but you don't have to be saying exactly the japa. Okay, it's a great way to start. Okay, for anyone who is very seriously considering meditation, can take this method, or if they are fine with it, definitely. And you can choose your own japa, you can choose your own mantra, can try it on your own. Yeah. Now we'll move on to the next, which is the last one. Actually, हाँ मतलब बहुत जल्दी आ गया. It is only 8:45. But we're moving on to the last one, which is the actual form of meditation. Okay, very important.
Okay, there are some things that you have to know, which you have to strictly follow for meditation. Okay. 1, back straight, head straight, neck straight. Okay, you cannot meditate in a lousy position. कि अगर आप ऐसी मतलब सोफे पे बैठे हैं, आपको मतलब बेड पे आधा लेट के करना है, you cannot meditate like that. For your body to know that you're doing something important for you, you have to sit straight. It is like telling your body कि अब मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ. It is very important. We're going to do this well. So back straight, neck straight, head straight, always. Now, during the mudra session, which I've taken before, I have mentioned a few mudras which you could be doing for meditation. I will repeat some and I will tell you some more. Okay. So, first one, always the mother of all mudras, Chin Mudra or Jnana Mudra. Actually, in the previous session, आपने हमें पूछा था कि चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में difference क्या है? Okay, and one reason which I had told you was that there's a difference in North India, South India. There's a difference in people using the same term in different places. कुछ लोग ऐसे या फिर ऐसे रखते हैं, so that is there. Yeah, but there is also this difference कि अगर आप बिगिनर लेवल हो और अगर आप ये मुद्रा यूज कर रहे हो, you will use the word chin mudra. If you have advanced in your stage of meditation, you will use the word jnana mudra. So अगर आप योगी हो, if you have advanced meditation practice, if you have practiced it, then you will be using the word jnana mudra. Okay, so these are two. This is one mudra that I told you. Now, for anybody who's doing meditation, I believe what you will want is knowledge. Yeah, so wisdom, not even knowledge, wisdom. So there are two mudras that I will tell you. Yoni mudra, 3 fingers. You fix them together. These two, you will touch the tips. Yeah, this is Yoni Mudra, and you place this. 1 second. You place this down here. Okay. So it is right at the center of your body. It is right in the center of your body, and you can. It is difficult to keep it up here. That is why you can keep it down. Normally, हम जैसे नमस्ते करते हैं तो हम ऊपर रखते हैं हाथ, अंजलि मुद्रा. But for this, you can keep down your index finger pointing up. Yeah. Second one that I will teach you is when you touch the top part. Here's the part that is coming in the front. Touch those parts closely together. Do not press. Never in a mudra do you have to press anything. You're just holding the position. So you're in here, you hold the position. Same thing, you have to keep it down. जैसे अभी योनि मुद्रा के लिए बताया था. Okay, so that is the second one. Both of these are for wisdom. If you would want knowledge or wisdom. Okay. Meditation के लिए actually काफी सारे मुद्राएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं, but you will want to know what you want. Okay, आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप मुद्रा लेंगे. हाँ, so that is the second one. Yeah, one posture, second mudra. Third one, you actually have to take this seriously. Okay, meditation is the utmost form of knowledge. You have to give it that sort of a respect. Yeah, so that is third. It is extremely important. Okay, meditation के लिए actually I will say कि आप पहले trainer के साथ करिए. You will have those meditations जहाँ पे कोई recording हो आपको सुनना है, and you will have those where
आप खुद से मेडिटेशन कर रहे हो, आप खुद से शांत बैठे, यू ट्राइंग टू मेडिटेट. इन द फर्स्ट वन इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर समवन हु इज न्यू, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होंगे जो मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में जो अलग अलग पढ़ के दिखाया. You have a loving and kindness meditation. You have one where you are aware of your body. You have one where you're aware of your thoughts. There's one where you are listening to a story about nature. There's also one where you are thinking of what you want. कि अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए तब उसी के बारे में सोच रहे हो. So there are different kinds of meditation. Here it is best to have a trainer to help you meditate with them. और you can have definitely आजकल इतने सारी recordings है, can find one that is good for you, which you like, and that you can definitely listen to. Now I would say with a trainer, best in the start. Once that switch, you know what is not good कि आपको trainer या फिर recording की आदत नहीं होनी चाहिए. That habit is not good. Definitely you can try different ones, but when you feel like you're moving towards meditation कि आपको आने लगा है, then it's best to start doing it on your own. You have to sit silently, start doing it on your own. You can even repeat. जो आपको ट्रेनर कहानी अगर कुछ सुनाते थे, if you were practicing on a particular form, जैसे आपको हमेशा नेचर के बारे में अगर आप मेडिटेशन करते थे, you can start doing the same on your own. So these are two types where you can start meditating. And जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, nobody can teach you how to meditate. Okay, ऐसे नहीं होगा कि आपको exactly बता रहे कि ये स्टेप करिए, वो स्टेप करिए, वो स्टेप करिए, वो स्टेप करिए और आपका मेडिटेशन हो जाएगा. That does not happen. What I had when I learned meditation, this was from Art of Living. Okay, मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रही हूँ. Okay, I am telling my experience, but across the world there are many gurus, there are many people who facilitate meditation in different ways. The one I'm talking about is Art of Living, where I done an advanced meditation program. Now this program आपको 3 दिन के लिए बिना बात करे, बिना it's मौन व्रत. Okay, you're not talking, but you are also not reading, not writing, not watching. ये नहीं कि आप दिन भर या फिर अपने फ्री टाइम में टीवी देख रहे हो या फिर फोन देख रहे हो. You're not doing that. And for 3 days, you're going to be only meditating. Okay, उनका schedule होता है, and you for the entire day, in the entire day, you're doing at least 10 types of meditations, 10 meditations, one after the other. Okay, so it's an experience to behold. Yeah, if you get a chance to do something like this, okay, imagine just reflecting and rewinding for 3 whole days. Okay, it is definitely something that you can try at least once in your life. और अगर आप एक बार करोगे तो I'm very sure you will want to keep doing it. Okay, 6 महीने में याद आ ही जाती है कि yeah, I need some 3 days for myself. Yeah, that is something in meditation that I would say that you can try. But there is one, जिन लोगों को meditation actually करना नहीं है, but you want a glimpse of it. कि मतलब ये नहीं कि मतलब 1 घंटे बैठ के meditation करो, but you want just one small part of it. And even if like meditation का 60% benefit आपको आ गया तो भी चलेगा, that sort. Then there's Jay Shetty. Jay Shetty is an urban monk, and there's a trick that he says, you have to do equal parts of breathing. So equal parts breathe in, equal parts breathe out. So you breathe in 2, 3, 4, breathe out 2, 3, 4. When you're in a position of being stressed, and when you're in a position when you know कि आप
you're going down, you're feeling low, you're feeling small. If you quickly do this, you can come up. Okay, this is not just breathing. Okay, it is breathing and meditation have a very blur boundary between them. So that is why when you want something quick, this is the trick. Okay, breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4. So equal parts, breathe in, breathe out. What happens is that your brain and your body aligns. Okay, sync हो जाता है. कभी कभार ये होता है कि मतलब आपका शरीर स्लो जा रहा है लेकिन दिमाग बहुत ही फास्ट जा रहा है. Okay, like it happens during moments of stress when you cannot function correctly, but your brain is running at the speed of light. Yes, so here it will help if you sync your brain and your breath to an equal part. Okay, so I think like 6 to 8 breaths will work. और ये definitely नहीं कि आपको बैठ के ही करना है, एक जगह पे बैठो है मुद्रा लेके बैठे. Even if you walk, you have to walk, then you walk, you take these breaths, you try to calm down. Yeah, but again, okay, no matter what you do, अगर आपका meditation इसके पास अगर आपको जा रहे हो, spine straight, okay, back straight, neck straight, head straight, no matter what sort of meditation you do or what you do. Yeah. Actually, one last thing, this is interesting. Okay, आजकल you have so many types of meditation. अलग-अलग की मतलब जरूर meditation started somewhere in one place, one geographical place, but now it's spread out and everyone's trying their own ways. Okay, जैसे हमने बताया वो लिखित जपा जहाँ पे लिख के आप जप कर रहे हो, and that is can be one very small step towards meditation. There is something called Zentangle. Okay, Zentangle में आप लिख नहीं रहे हो, आप draw कर रहे हो. Okay, you have to draw really simple steps, simple shapes. ये नहीं कि आपको एक शेप दी गई है कि एक ही तरफ करना है, एक ही टाइप से करना है, एक ही पेज पे करना है, ऐसे कुछ नहीं है. Okay. If you are an artist, if you have been in that space कि अगर आप drawing करने लगे हो और पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर गया, that sort of feeling, you're trying to bring that towards you. So Zentangle is pretty new. It was patented only this year or this century. Okay, and it is also considered to be a form that will help you move towards meditation. You can even see that. Very cool. और सिर्फ ये नहीं कि इतने सारे अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस है या फिर मेथड्स है जिससे आप मेडिटेशन में जा सकते हो, बट you have to give it all a try. You have to see if it works for you, if it is actually, helping you. कि इतने सारे हैं, अब मतलब मैंने ही जैसे 5-6 बता दिया, इंटरनेट पे जरूर 50 अलग है. So you can come down to see which one is working for you, and then you can keep doing that. That's left to you, and it's left to you whether you choose a trainer for something like this. Definitely, it will help that way. मैं तो 4 मिनट पहले जल्दी खत्म कर दिया. कोई बात नहीं महती जी, यहाँ मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं. अच्छा. आजकल हर चीज को, हर बात को कोविड से जोड़कर देखा जाता है, प्री कोविड, पोस्ट कोविड. कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि जो पोस्ट कोविड रिकवरी चाहते हैं, खास करके लॉन्ग कोविड जिनको हुआ है, उनके लिए कौन सा मेडिटेशन बहुत जरूरी है? ओके, तो अगेन आई विल से कौन सा, ये आपको करेक्टली नहीं बता पाऊंगी कि ये एक आपके लिए अच्छा है, बट आई टेल यू, जैसे अगर आपको योगासना करके मेडिटेट करना है, दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि आप फिजिकली थोड़ा सा वीक हो गए. सो आपका फोकस यही पे जाएगा कि अरे आजकल ये आसना हो नहीं रहा है, ये दर्द कर रहा है, थक जा रही हूँ. सो मे बी यू डोंट वांट टू ट्राई दैट.
कोविड के लिए आप कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो इफ यू पेयर ब्रीदिंग विद मेडिटेशन इट विल वर्क वेरी वेल। कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप वो कर रहे हो, उसके बाद आप थोड़ी देर इफ यू कैन सिट डाउन, ट्राई 3 ओमकारास और भ्रमरी प्राणायाम एंड देन यू मूव टू मेडिटेशन। हाँ, बैठे बैठे करिए एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसका स्ट्रेस ना लीजिए। ओके, जिंदगी में या फिर कोविड से ही काफी सारा स्ट्रेस हो गया है, सो हाउ मच एवर यू कैन डू, इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक कि ये अच्छे से करना, हम अच्छे से हो रहे हैं, ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यस, सो Hi Mahati, this is Dr. Swadeep Srivastav from Heal Foundation. Also, I've heard a lot of effectiveness of Brahmari Pranayam. What is the right timing? Should it be done early in the morning, or one of the yoga teacher told me that before sleeping you should do Brahmari Pranayam. So what is the any sort of appropriate scientifically proven any timing? Okay. साइंटिफिकली प्रूवन अगर आपको बताना है तो आई विल हैव टू लुक फॉर अ रिसर्च पेपर, बट आई विल टेल यू व्हाट लॉजिकली आई थिंक इज करेक्ट। ओके, भ्रमरी प्राणायाम आपको शांत करता है। सो इन द मॉर्निंग इफ यू गोइंग टू मेडिटेट, और अर्ली मॉर्निंग अगर आप योगा करते हैं, यू वांट टू डू समथिंग दैट इज कामिंग, सो या फिर एंड ऑफ द डे व्हेन यू वांट टू गो टू स्लीप. So these are the 2 times where you will want to do Brahmari Pranayam. Yeah, so when you want to calm down, if you're in a situation where you have to calm down, then also Brahmari will help you. So always think of breathing exercises that way. Okay. Largely, what is it going to do for you? ऐसे normally नहीं होता है कि कोई चीज आप सिर्फ सवेरे करिए, सिर्फ रात को करिए. Yeah. Like even Surya Namaskar you can do in the night. It's okay. शाम को भी कर सकते हैं. It is fine. So only when you want to calm down, आप भ्रमरी करेंगे. Over to you, किशोर जी. मेरा एक और सवाल है माती जी, आज हमारा टॉपिक है बच्चों के हेल्थ पे, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन पे. बच्चों को क्या मेडिटेशन करना चाहिए? हालांकि बहुत मुश्किल है उनसे मेडिटेशन कराना. और अगर कराना चाहिए तो किस एज ग्रुप तक? ओके, देयर इज एक्चुअली ना, जो बेबीज होते हैं ना, वो खुद से ही मेडिटेट कर रहे हैं. आप अगर मुद्राएं देखिए, काफी सारी मुद्राएं बेबी जैसे सोते हैं ना, उन पे बनाई गई है. सो बेबीज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. थोड़े से बड़े हो रहे हैं, यू विल सी देम कि वो जो खुद का कर रहे हैं वही खुद का कर रहे हैं. They don't care कि दूसरा क्या बोल रहा है कोई, मतलब उन्हें चिंताएं बहुत कम है. So it is not like you have to forcefully start meditation for them. लेकिन yoga you can definitely introduce. Okay, yoga, breathing exercises आप introduce कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से ही आदत है, then by the time you come to teenage it is easy for you to learn meditation. अगर आप अचानक से टीनेज में बोलो कि आपको शांति से बैठना है, लाइक राइट नाउ आई वाज लिसनिंग टू द टॉक, लाइक वेरी ट्रू, टीनेजर्स आर डिफिकल्ट टू डील विद, सो यू हैव टू प्रिपेयर किड्स फॉर दैट एज. तो इसलिए बच्चों के लिए आई विल नॉट से कि एकदम स्पेसिफिकली मेडिटेशन करिए, बट देयर आर प्रोग्राम्स इवन फॉर किड्स की ब्रीदिंग के लिए, योगा के लिए. थैंक यू महती जी, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मेडिटेशन के लिए, बहुत नई नई बातें बताई. बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आपका. और अब हम सेशन 2 की ओर बढ़ेंगे. मेडिटेशन के बाद माइंडफुलनेस की बात करेंगे. ओवर टू यू मिस्टर स्वदीप. थैंक यू किशोर जी. सो एडमिन, आई वुड लाइक टू प्ले द सेशन इंट्रो वीडियो प्लीज. Admin, please play the session intro video.
introducing this session, which is very apt in the current scenario. Can we play the slides? Admin, can we play the slides? So this session on mindfulness, strengthen your immune system with simple strategies. We have with us a very renowned expert, Ms. Divya Prakash. Ms. Divya Prakash is an accredited dietitian and nutrition counselor, a wellness therapist, deep sleep mentor, psychological counselor, and blogger. She is also a certified professional trainer accredited by MSME Technology Development Center and is currently working as a coordinator and wellness expert of an artificial intelligence-based healthcare company headquartered in Australia. This is an excellent, beautiful profile, Ms. Prakash. Welcome to you on the show today. Thank you so much, Mr. Srivastava. Yeah. So what does, before I give it to, I will start with questions in Hindi. हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं किशोर जी को दूंगा हिंदी में पहले क्वेश्चन से शुरू करें, आपसे एक वार्ता शुरू करें, एक डिस्कशन शुरू करें. But I just wanted to know from your profile just one point, which is 2 points in fact, which are very unique and interesting. Though you have come on our show earlier, Mr. Shankar and Kishore ji would have definitely quizzed you. But this I found different. One is deep sleep therapist. What did it say? What deep sleep therapist you said? One of your points in your profile said. What actually, how as an expert do you help in that, ma'am? Yeah, actually, deep sleep is very important concept. We all sleep. Sleep is the integral part of our life. You also know that we spend 1/3 of our life while we sleep. Why I'm telling you? Like we sleep 8 hours, roughly 8 hours every. Out of 24, we spend our time for sleep for 8 hours. It means 1/3 of life we spend on sleep. And this is very important because sleep, while we sleep, our body repair and rejuvenates all the organs system. It enhances your immunity. It enhances your longevity. It gives so much of benefit to your life. It repairs and rejuvenates all your body organs. But over a period of time, we have started neglecting our sleep or getting more success, because this is a very good quotation for today. We believe in doing well rather than being well. So we started compromising our sleep because we all have 24 hours and we need more time to do well in our life. So there is only one aspect, that is called sleep. We are ready to compromise for that. But sleep is very important. There are 4 to 5 cycles of sleep. And in one, deep sleep is a very important cycle which enhances your memory, concentration, it enhances your immunity, it enhances your digestibility, it enhances your heart function, everything. So deep sleep is very important, and there are different phases of a sleep cycle. We generally spend 4 to 5 sleep cycles, each of 90 minutes in hours. 6 to 8 hours, and that is start when we start sleeping, like awake phase, light sleep, deep sleep, REM. REM means rapid eye movement. So we train our participant or patients for deep sleep, how to achieve that deep sleep to get maximum benefit out of sleep. So this is my profile, because and everyone requires sleep in their life. So, ma'am, very interesting. So, there's a lot of people we come across, maybe including myself and a lot of other of my friends and other people, where we see that sleep cycle sometimes happens in 2 phases. Like you have a deep sleep for say about 4 hours. Suppose one slept at 11 o'clock, woke up at 4 o'clock, and then maybe went to the washroom and then again tried to sleep at say 5 o'clock and then woke up at 7:30 on a normal time. Do you think that this is okay, or the deep sleep means one stretch sleep of maybe 6 hours? No, Mr. Srivastava, here is the concept is totally different. Like I have told you, there are 4 cycles. Like I have mentioned you, awake, light sleep, deep sleep, then REM. Okay. And each cycle contains of only 90 minutes.
out of that 2 to 5%, like it's a graph. If you can see my hand, it's like a graph. It's like this kind of cycle is there. Okay, wave cycle is there. You sleep only for 2 to 5% of 90 minutes for awake period, then 40 to 45 minutes for light sleep, and then 13 to 25 minutes of 190-minute cycle for deep sleep only, and rest 20 to 25 minute cycle time for your REM movement. So every cycle, it's nothing like that you are sleeping thoroughly like 11 to 5 o'clock और आपका वो पूरा continuous deep sleep है. No, you get deep sleep only for 13 to 25 of that time, and that is sufficient. Again, you process to REM, then awake period, then light sleep, then deep sleep, and this deep sleep happens only for 2 cycles of your night. So it's a wrong concept, but you need light sleep, awake phase, light sleep, deep sleep, and REM. So this is very scientific. So it's a wrong concept. लेकिन वो उतने time पर सोना and all the phases has its own importance. So you have to understand कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ deep sleep चाहिए and that is only 13 to 25%. तो मैं थोड़ी देर सोऊंगा तो काम चल जाएगा. For entering into that deep sleep, you need to enter into awake phase, then light sleep, then deep sleep, then REM. It's like a curve. So, ma'am, for viewers' benefit, can you explain this REM? What is the full rapid eye movement? Rapid eye movement. Okay, got it. So, a lot of studies have been coming, and we all keep reading about the minimum hours of sleeping. Got it. Is my voice coming? Your voice? Breathing slow. Yeah. Your voice is coming little slow to me. Is there problem of any network? किशोर जी, हमारी आवाज आ रही है पूरी क्लियर? आपकी आवाज ठीक आ रही है और दिव्या जी के नेटवर्क में बैंडविड्थ स्लो है उनका. अच्छा, वो ड्रॉप ही करेंगे. पहले भी हमने देखा है कि कई बार बैंडविड्थ, और आश्चर्य की बात यह है कि बेंगलोर से होता है बैंडविड्थ स्लो जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है. टेक्नोलॉजी हब है. मैम आ गई, दिव्या जी आ गई. अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब बेटर आ रही है. तो मैम, ये जो स्टडीज आती हैं कि एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए मिनिमम 6 to 7 you should have minimum 6 to 7 hours of sound sleep. So what is your opinion on that? Yeah, Srivastav ji, actually it depends on person to person. बहुत सारे कैटेगराइज किए गए हैं डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी बेसिस पर लोगों की स्लीप रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आपने सुना है कि जैसे मोदी इन हेल्दी वे, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट 8 to 9 hours होती है. अगेन विद एज स्लीप रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, बट ideally 6 to 8 hours is the time for a healthy person to get the sleep. 6 से 8 घंटे की नींद जरूर होती है, और वो भी नॉट इन पार्ट्स. आप अगर रात को 11 o'clock हैं, एक्चुअली सोना चाहिए हमें 10:30 के पास, एंड मॉर्निंग यू कैन गेट अप एट 4:30 और 5, जिसे कुछ ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं. क्योंकि हमारी जो हैबिट हो चुकी है देर रात तक जागने की, हमारी स्लीप साइकिल ही स्टार्ट होती है देर से, अगर हम 2 बजे या 2:30 के पास सोते. बट आइडियली वी शुड स्टार्ट आवर स्लीप at 10:30 so that we can start our sleep cycle from 11 p.m. क्योंकि यही वो टाइम होती है हमारा दिव्या मैम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जगह आपको बदलनी पड़ेगी दिव्या मैम. In the meantime, I'll ask admin to play we recently started a program, Wellness Matters every Thursday, Wellness Matters by HL Care. And this program is... Hello? Yeah, now your voice is coming. Your voice was lost, ma'am. But your video is not coming. Your video, I think you've switched off, or it is not coming. Video is switched on.
network issue actually because of a massive storm in this area. I'm Okay, talking on okay. 4G because complete Oh. network is failed. Oh my God. Okay. So, no, I'll just come back to you, ma'am. I was saying that we started a program every Thursday, Wellness Matters by HL Care. And we'd like to show some snippets. We have a lot of, a battery of experts who come on that show, have started coming on that show, giving some or the other message on wellness. And in between, we have 1 minute videos. We'll keep playing in between, ma'am, while we keep talking to you. After this, Yeah, sure. sure, Malvi will take up some questions with you. So I will request my admin to play the first video by the yoga expert, Dr. Sudeep Jha. लोगों ने अलग अलग तरह से अलग अलग बातें बताई कि वेलनेस का मंत्र बताया कि कैसे स्वस्थ रहें, कैसे बीमार होने से बचें। आप हमें योगा एक्सपर्ट के नाते अपने विचार बताएं। हम सबसे ज्यादा केवल सुनते हैं और करते नहीं हैं। जितनी सारी बातें हुई है, जितने एक्सपर्ट ने बताया है, अगर कोई एक भी बात अपने लाइफ में अगर इसको चेंज कर लें तो शायद वह मंत्र बन जाएगा और आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, जो जितने हम सुनते हैं ना, उसमें से एक भी पॉइंट करने को होना चाहिए। दूसरा, जैसे हम अपने लाइफ में हर चीज के लिए टाइम देते हैं, हर चीज के लिए टाइम है, और जब तक हम बहुत बीमार नहीं पड़ते तब तक हम डॉक्टर या जो हमको होना चाहिए उसकी बातों को नहीं मानते, जब तक हम बिल्कुल बेड पे ना आ जाए। तो मेरा मानना है कि सबको पता है, हम लोग ही बार बार बताते हैं और आपके माध्यम से भी सबको पता है सब कुछ के बारे में, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको अपने मन में नहीं धारेंगे, अपने मन में अडेप्ट नहीं करेंगे, ये मेरे लिए है, ये मेरे लाइफ के लिए है, तब तक वह चेंज नहीं होगा। Thank you for this message. Over to you, Kishore ji, for your set of questions. थैंक यू सदीप जी। दिव्या जी, अब आपका वीडियो भी आ रहा है अच्छे से। अभी आपके प्रोफाइल की बात हुई, मैं भी आपका प्रोफाइल देख रहा था। आप मेटामॉर्फोसिस की फाउंडर हैं और मेटामॉर्फोसिस का हिंदी में मतलब होता है काया पलट, नेचुरल सुपर नेचुरल तरीके से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप बताइए कि ये आपका संगठन क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन के एरिया में ये क्या करता है? हेलो दिव्या जी का ऑडियो। किशोर जी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई, मैंने अपना वीडियो ऑफ किया है, शायद अब मेरी आवाज आ रही है। हाँ, मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, तो उससे पता चला कि आप मेटामॉर्फोसिस की फाउंडर हैं और मेटामॉर्फोसिस का हिंदी में मतलब होता है काया पलट, यानी सुपर नेचुरल तरीके से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें जरा विस्तार से बताएं कि ये आपका संगठन क्या है और क्या करता है। हम सभी तो वही हैं, पर हमारी जिंदगी हमें एक, जैसे कि अभी योगा का आपने एक वीडियो क्लिप जो स्निपेट दिखाया, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ में, हमें जो गॉड ने बनाया है, क्रिएटर ने हमें बनाया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिसयूज करते हैं हमारे इस बॉडी को। जो गॉड की गिफ्ट है उसको हम मिसयूज बहुत ही तरीके से करते हैं। हम अपने ईटिंग हैबिट में इतने ड्रेस
आपका ऑडियो फिर चला गया दिव्या जी। I will request Chavi, can you talk to ma'am that we are playing some other videos and maybe we can connect in the next episode when the network is much better. Absolutely. I'll talk to Divya about it. So the admin, I'll request you to play the second video on wellness matters very quickly. Video by Ms. Nazli. सब लोग खान पान की बात बहुत कर रहे हैं और आप फाउंडर डायरेक्टर हैं फ्रीडम वेलनेस के, तो वेलनेस भी है, फ्रीडम भी है, आप कुछ अपनी राय दीजिए। सबसे पहले है कि जब हम खाना खाएं, इसका मंत्र बहुत सिंपल है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अपना एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। अब देखिए कि एटलीस्ट हाफ पार्ट ऑफ द प्लेट हम हमारी सब्जियां खा रहे हैं। दिस कैन बी रॉ वेजिटेबल, कुक्ड वेजिटेबल। एज इंडियंस हम कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे रोटी चावल बहुत खाते हैं, इसको रिड्यूस करके खाली 1/4 पार्ट में हम डालेंगे और प्रोटीन्स के ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बाकी हो गए हमारे हेल्दी फैट्स जैसे नट्स है, सीड्स है, ये इनको भरपूर खाइए। और ये सिंपल तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है। अपने आप को 3 क्वेश्चंस पूछिए, क्या मैं 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खा रहा हूँ? ओके, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, डू आई विश माय अलार्म रैंग आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स और मेरे को आधा घंटा मिला? अगर कोई सुबह को उठता है और 8-6 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ उठता है तो कुछ ना कुछ आहार में प्रॉब्लम्स है। तो ये 2-3 सिंपल क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे खाने में जो है कमियां हैं। Now I request admin to start our can I try with Divya ji? Divya ji, is your voice coming or is still the network very poor? No, ma'am, the network is very poor. The voice is. So what I am requesting you, ma'am, is that we would like to continue the conversation in our next episode when because you had a storm there, so the network is not coming. My viewers will not be able to listen to what you are saying, ma'am. So we will, yeah. So I would request you that if we continue our discussion in the next episode, ma'am, we'll have a tie-up with you when you are available, and we will continue with some videos today to fill the gap, ma'am. Is it okay? Yeah? Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for coming because the voice is not coming at all. It is just very easy. Thank you. Thank you. Admin, I'd like to start with our, we had a beautiful conversation with Dr. Professor Amitav Banerjee, the head of community medicine of D.Y. Patil University, one of the leading public health expert in the country on the chronicles of COVID in our a couple of weeks back. And I would request my admin to play that video on Your Health Counter episode with Dr. Professor Amitav Banerjee. Very, very informative. All our viewers will find it really very informative in terms of how he has broken a lot of myths around COVID, and he's spoken straight from his heart that what is going right and what is going wrong in COVID management in the current scenario, what our people should know in terms of the right kind of management. I'd like the admin to start the video.
आज का टॉपिक है क्रॉनिकल्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, थर्ड आई पर्सपेक्टिव विद डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी डॉक्टर DY मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर और कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं। इससे पहले वो इंडियन आर्म फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में कम्युनिटी मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी का हम अपने शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से बातचीत करेंगे हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर R शंकर। मिस्टर शंकर का जर्नलिज्म में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह हील फाउंडेशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेल्थ राइटर्स और एडिटर्स कन्वेंशन के चेयरमैन भी हैं। वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस, कर्नाटका और केरला के रेजिडेंट एडिटर भी रह चुके हैं। Now the topic for today's Your Health Counter is COVID-19 pandemic, third eye perspective. Somewhat similar to the title of your book called COVID-19 pandemic, a third eye. Looking back at the past 2 years of the pandemic, can you tell us what did India do right? Three right things that we did and 3 mistakes that we did. The pandemic started in China, so then it went to Italy, then the lockdown, and then there was a panic. So right thing was, of course, initially the lockdown was announced for 2 weeks. I mean, that is the only right thing, I think, which was overwhelming the hospital services. That also is debatable. I mean, that is partly right because it did not really check the transmission. And I would say the wrong thing India did was follow the West, follow the WHO and follow the CDC, because the data from the Western countries could not be extrapolated to a country with different demography. And it did the right thing. I mean, I wouldn't say it did the right thing, but it had the right intentions. I mean, it was an act of, I would say, omission rather than commission, and it did everything right in good faith as per the guidelines of the I wouldn't say WHO or CDC, as per the Western countries, what they were doing. And as per the guidelines from USA, the signals from USA, I would say, because that's a bellwether of the global policy. And I have seen whenever one follows the USA, you land in chaos, whether it is in war or in pandemic. So I think it has the right thing was trying to, I wouldn't say right, but right intentions was trying to prevent the pandemic taking roots in India. So with right intentions, our Prime Minister announced on 24th March total lockdown. So that was a right intention, but that was something which ultimately turned out to be the wrong thing. So there is this is such a difficult situation, pandemic, that with every right thing there is a wrong thing. I mean, the right and wrong are not in black and white. So it is the degree of wrongness and the degree of rightness. So it would be very difficult to 1, 2, 3, because I can make 10 things which have something right in it and something wrong in it. So I mean, like the second was the vaccine. Something is right in the vaccine, like vaccine can prevent severe disease and death, particularly for the elderly. And the wrong thing is that you have to use it judiciously. So rolling out in a haste across the young people who are not without proper risk benefit evaluation is not very right, I would say. I wouldn't say it is wrong and right. As I said, in this complex things, actually the world tried, and India also tried to make decisions on black and white. So that nuanced decisions were missing. Taking each situation is different, each region is different. So there was something right and something wrong, and some states did something right in the beginning, and subsequently it turned out to be not very right. Like those states which fared well in the initial phase, like Kerala and all, they lagged in the later phase. I mean, the intentions were right to check the spread of transmission, but once the community transmission had taken place, and that was another major wrong thing the country did, not accepting there is community transmission. Because if you accept community transmission, you could have saved a lot of resources in chasing the virus, which was futile because it spreads very rapidly. You could have focused more on treating the really people who require treatment, that is the moderately ill and those who are having severe disease.
So you could have concentrated our resources that way instead of. So there were a lot. I mean, it's a global chaos actually. I wouldn't say India or any country. There were only one country which did right. 2 countries like Sweden, but they were told that they are doing wrong in the beginning because there was those mathematical models which took things, like human beings as inert units rather than social beings. So that was too much of tunnel vision, too much of piecemeal solutions. The world did not get it right, except for few countries like I would say Sweden and to some extent Japan. Japan also did not have a lockdown, and Belarus. So actually, some sort of inactivity was the right thing. Looking back, the last pandemic, that is plague pandemic, organizations like the World Health Organization did pretty good job. That's what we are told as per reported data. Would you view the role played by WHO in kinder light, or did they fail? WHO this time didn't get it right. WHO got it right earlier. WHO did not get it right because, and WHO also flip-flopped. So that flip-flop itself causes lack of trust. In fact, when the Wuhan was affected, China locked down Hubei. It locked down only one district. And the WHO came down heavily on China. It said that this is unscientific and WHO never recommends. The Western press also said it is authoritarian. And it criticized, the WHO criticized. I have got the evidence on it. And but subsequently, Italy did the countrywide lockdown. Again, they got it wrong because Italy, they have a very elderly population. And again, Italy, the pandemic hit the nursing homes. Average age of death in Italy was 80 years. And that had a very high, particularly case fatality in hospitals. In fact, one initial paper gave out the case fatality as 20%. So that was alarming, and the models took this as and predicted a catastrophe for the whole world. And the WHO did not have a proper surveillance system to really cross-check this and see the finer points, the demographic profile and who are dying. So it was chaotic. And so WHO failed miserably in this pandemic. I vividly remember in the initial episode of Health4All, you had created a flutter by saying that lockdowns do not serve any purpose. And in the same episode, you had mentioned that the way out is to attain herd immunity. What is your current views on herd immunity? The data reinforces those views. If you see the Worldometer data, it is in the public domain. Like those countries, there's a published study also that data from 68 countries and 2947 American counties, they tried to correlate the premise was, while denying, those who are denying herd immunity, their premise was it is only vaccine which can achieve herd immunity. Herd immunity can be achieved either by recovery after natural infection and by vaccination. So their premise was that vaccine is the only panacea which will achieve herd immunity. But the recent data, it is available in the public domain from 68 countries and 2947, there's a published paper on it. It does not show any correlation with the level of population level immunization and the trends and the mortality from COVID-19. And you can have a look, even if you just have a quick glance at the Worldometer data, you see this heavily vaccinated countries like Israel, they were into the 4th dose. They are having a peak. They had rather, after the peak, it comes down naturally, because even if the vaccine fails, large number of people get infected and ipso facto, they get the herd immunity from natural infection. Some due to vaccine immunity and more strongly due to the natural infection. And then subsequently studies from Israel, it has established that the natural infection gives 13 to 27 times more robust immunity than vaccine-induced immunity. So these are scientific papers and established evidence. And grudgingly, the CDC also after 2 years grudgingly admitted that herd immunity or natural immunity is stronger than vaccine-induced immunity. You have recently tweeted your study titled COVID-19 Mass Vaccination, How Much Impact at Population Level. In this, you had said the patterns or trends of and deaths from COVID-19 before and after vaccine rollout is not
encouraging. And then you left it to the readers to infer conclusion. What is your viewpoint? Of course, you had said that halfway into 2021, there was a sobering realization that impact of mass vaccination at population level was rather modest. Yeah, in fact, the same thing was asked to me just a couple of days back. There was a filmmaker from Germany, Robert Sibis. So I was discussing this day before yesterday only in his studio at Mumbai. So he was trying to act as a devil's advocate. When I presented this data, my editorial, he was trying to give a devil's advocate, and I thought he has stumped me, but I mean, he has cornered me. Then I got a quick, I thought on my feet, though while I was sitting, I could think on my feet. I was showing the same data, I was showing Japan data before vaccination, post, and similarly. Then I was comparing UK and USA. Then he says, no, you can't compare, I am acting as a devil's advocate. They may be different system of health. Some have very good health services, some have poor data collection. So one country data, you cannot compare with other countries. So you cannot come to this. He told me that you answer my question. I am taking this way. That then suddenly I got an inspiration. I said, yeah, but I am comparing Sri Lanka with Sri Lanka. Before the vaccine, after the vaccine. So whatever deficiencies in data collection Sri Lanka had before vaccination, presume. Similarly, Malaysia before, after, Africa before, after. So then I said, yes, that is good. Then he was very fascinated. Then he made me talk on that and he recorded it. Let us see. He says, this is very fascinating. And I said, this is something which a high school student can also infer from it. So we have to, I mean, what is that it has been a quite, anticlimax. Because everyone was led to believe that, now we have got the vaccine and everything will come to normal. And after the vaccine, there is more chaos. I mean, first, you forget about the side effects. I am not talking about the side effects. I am not talking of the long-term adverse effects. I am talking of the economy scale, the amount of money which is invested. I mean, and if you don't get the return for that, I mean, you are draining away from the other. As it is, you have had so many draconian measures like lockdown and other things, which has really, Sri Lanka has got into bankruptcy. Other countries may follow suit. So that may again increase the other diseases, diseases like malnutrition. Already 2,000 children die in India daily, and other diseases of poverty, tuberculosis. So this is a concern that, public health should not be only one disease. Public health should be other diseases also. I would say the best thing would have been to preserve a vaccine in those countries like poor countries like India or Sri Lanka. Preserve the vaccine for the elderly and those who have got comorbidities. As I would call it, focused vaccination rather than mass rollout. I'll come back to your article in that you went on to say that given the uncertainties, it is not fair to shame or stigmatize those who refuse to take vaccination. Can you throw some more light? Definitely, because the way it has been stigmatized from the very beginning. I mean, it started anyone working in a hospital was stigmatized in spite of the thalis and other things. But once they came back to their own colony, they were stigmatized and not allowed. So in doctors or paramedical. So stigma has been a continuous and shaming has been then after them, masking became a stigmatizing. And then anybody died in the family, the family was stigmatized. So it was very unfortunate that we could not tackle this stigma from the very beginning. Now, after the vaccine rollout, the people who refused the vaccine were getting stigmatized. That would have been justified if the vaccine had prevented the transmission. But subsequently, the vaccine manufacturer also considered, in WHO, CDC considered that it does not prevent transmission. They said that it prevents severe death and hospitalization. So if it doesn't prevent transmission, a vaccinated person is also spreading the infection. So there is no scientific background to stigmatize a person who is not taken the vaccine. In fact, they have done studies and found the person who has recovered from natural infection has got more, they cannot transmit. I mean, they transmit less than those vaccinated person. So particularly in our country, 80% of people have faced the infection. So practically everybody, so this vaccine will not give much benefit
And had they kept a control group, we would have had a very clear answer. So unfortunately, the control group is not being kept here. Everybody is, and actually on paper, and even the affidavit given by the central government to Supreme Court says that vaccination is totally voluntary. And once it is voluntary, and then the second line says that everybody, all states should ensure 100% vaccination. What are your views on long COVID? Some say that long COVID may last up to 3 months, while others say it is 6 months. Some say it is 2 years. So, what is your view? The way the things are, floated, that there is long COVID, and the whole pandemic has caused, as you also remarked earlier, mass psychosis, mass obsessive compulsive disorder. So everybody has become neurotic. So a person who believes in long COVID, he has recovered from COVID. Suddenly he reads about or hears about long COVID. So after 1 month, even if he gets a severe headache, he will attend, I had a COVID, this is long COVID. He has some other lung, he may have air pollution in between, he may have some other infection. How do you tease out that in the interim, that person has not been exposed to some other pathogen or some other year? So everything is attributed to that. That's a bias. After any viral infection, if you get an influenza for a month or 2 months, there is weakness, there is fatigue, there may be sometimes very, very severe cough prolonging. Every viral infection gives a chikungunya, anything. So it's a normal phenomenon. Giving it special status makes it more complicated. Now, some say that India can expect a fourth wave sometime in August, considering the rising number of cases, again, the Western data, European countries. What's your viewpoint? My first question is, where is the third wave? Everybody is conveniently forgetting the third wave. I don't know. Either they don't know how to count. So what wave are we in now? No, I am still waiting for the third wave. I don't know. That same mathematical modeler had predicted a third wave where the pediatric ICU will be full, where daily there will be 1 lakh death or something like that, 1 lakh cases. So where is the third wave? It has got no meaning. I have just read that paper, and that paper has taken something from Ireland or something from some country in the north, and they took the graph as if, some sort of year, and then they predicted, which again, their countries are different than our country. Overlooking that, 80%, 90% of our people have developed natural immunity. Those countries are very scarcely populated country. They will get the up and down. It's something like voltage fluctuation. We have got a stable equilibrium now because the majority of our population have got natural. So we won't have any waves. We may have a few ripples. That too, if you keep looking for it, if you keep poking your swab into the throats, you may get. You can start looking for other pathogens also. You will find more. I mean, never in history of public health you have just put on the basis of a RT-PCR test which picks up a fossil of a virus and label it as a case. The case definition itself is debatable. So that way, I mean, there will be no third wave, there won't be any fourth wave. Thank you for playing this very informative interview we had with Dr. Professor Amitabh Banerjee, who's a regular on our show, but most importantly speaks from the heart. He highlighted various important aspects on his Your Health Counter episode on Chronicles of COVID. Now we move on to another important capsule which we produce every week. This capsule is done by none other than my co-host, Mr. Kishore Kumar Malviji, and this is a Health Nama in Hindi, which throws light on the current health scenario and talks where Mr. Malvi
puts his questions straight to the experts, and they answer for the benefit of viewers. They answer it straight, and we get a lot of information on the current topics we cover through Healthnama. I'll request admin to play the Healthnama this episode. नमस्कार। एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था मानव जीवन का ऐसा मोड़ है जो हमें जवानी और युवावस्था की ओर ले जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम इस ग्रुप के बच्चों पर खास ध्यान दें, क्योंकि इस पर उनका भविष्य टिका होता है, खासकर सेहत के मामले में। उनके खान पान और रहन सहन के साथ साथ सेहत संबंधी उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना जरूरी है। कोविड महामारी के बाद ये चुनौती और बढ़ गई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जवानी के दरवाजे पर खड़े ये बच्चे माता पिता या अभिभावकों से किसी बात पर लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में केवल डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ही उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसी नाजुक एज ग्रुप को ध्यान में रखकर हमने आज का हेल्थनामा तैयार किया है। कई डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस विषय पर खुलकर बात की और बताया कि इस नाजुक मसले को कैसे हैंडल किया जाए। अर्ली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की जी हमेशा बात होती है, और हम सभी जानते हैं कि एक सोशल इशू है, लेकिन एक डॉक्टर की क्या भूमिका होती है इसमें, इसको रोकने में? आप इसको अपने अनुभव से बताइए कि क्या डॉक्टर की भी कोई भूमिका है इसमें? डॉक्टर की भूमिका होनी चाहिए, उतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम जो हमारे सोच विचार अभी फैल रहे हैं, तो वो प्राइमरीली जो हम एक मुद्दा को देखते हैं, जब ये वो आई, किस चीज के लिए आई है, उसको क्विक फिक्स कर लो और हाथ धो लो। ऐसा अभी नहीं हमको करना है। हमको उसके पूरे इर्द गिर्द के, अगर एक महिला आई उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेके, तो हमको ये भी पूछताछ करना पड़ेगा कि उसके कितने बच्चे हैं, उसमें डॉटर है, डॉटर कितनी उम्र की है, वो अभी क्या कर रही है। देखो उनके आप ऐसे देखभाल करो और ऐसे सोच विचार करो। सोशल फैक्टर्स पे भी हमको एट एवरी टच पॉइंट, जब जब हमको मौका मिले, ये बात हमको छेड़नी चाहिए एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्योंकि आज तक भी जो डॉक्टर गूगल हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे कहने के भी उन्होंने मायने रखते हैं, क्योंकि कौन उनको कह रहा है और किस चीज के लिए हम कह रहे हैं, उसके तो उन लोग उतने तो मर्यादा उसको देते ही है, और उसके अनुसार उनके सोच विचार बदलने का काम हमको उसका ठेका लेना है, ऐसे मैं मानती हूँ। कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद, हालांकि इस एज ग्रुप में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ लोगों को, लेकिन आपके पास किस तरह के ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं कोविड के बाद और कोविड के दौरान, जो शिकार हुए हैं, जो इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं? देखिए, जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना, उनमें इम्यून क्षमता काफी होती है। तो बच्चों में ऐसा देखा गया है कि अगर उनको कोविड इन्फेक्शन भी हुआ है, तो इट इज ऐसे फ्लू, नॉर्मल फ्लू, कोल्ड कॉफ, खांसी, बुखार, इस तरह वो पास आउट हो गया है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हुए हैं जिनको आगे जाके लंग्स की प्रॉब्लम हुई है, बहुत ही कम मात्रा में। आई वुड से ओनली 2 to 3% इस एज ग्रुप में। क्योंकि बच्चे, क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एक तो खेलते हैं, उनकी सारी एनर्जी, बिकॉज आपको पता ही है कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हैप्पी हार्मोन्स सब जनरेट होते हैं जब हम घूमने जाते हैं या हम खेलते हैं। आपने देखा होगा सारे बच्चे ग्राउंड्स पे रहते हैं, स्पेशली बॉयज। तो इस एज ग्रुप में ये बहुत अच्छी चीज है कि इनकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण ये बच्चे कम मात्रा में पीड़ित देखे गए हैं। उसके ऊपर मेरा आप सभी पालकों से निवेदन है कि बच्चों को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फूड्स खिलाएं इस एज ग्रुप में। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी दादी नानी अभी 80-80 साल की हैं। बच्चों, हमारी दादी नानी 80-80 साल की फिर भी चल लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी एज ग्रुप में अच्छा घी खाया है, अच्छा दूध पिया है, अच्छे फल फ्रूट खाए हैं। आपके जो आजकल
येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ये सब खाए हैं। पिज्जा, फास्ट फूड्स नहीं खाए हैं, बिकॉज उस टाइम फास्ट फूड्स नहीं होते थे, यू नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू reiterate, even for mental health disorders, even for physical disorders, even for emotional disorders, it is very important to eat right. इस ग्रुप के लिए, इस एज ग्रुप के लिए पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने दोस्तों की तरह फिट रहना, उससे ज्यादा फिट रहना, उससे ज्यादा स्मार्ट रहना, ये प्रेशर जो है अंत में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आप अपने अनुभव से बताएं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इस ग्रुप में होते हैं, इस ग्रुप के बच्चों में होते हैं जो आपसे संपर्क करते होंगे, उसमें इसका कितना हिस्सा है इस पीयर प्रेशर का? अच्छा, तो सर इसमें क्या हो रहा है कि हर बच्चा दूसरे को कॉपी करने में इंटरेस्टेड है। अब इसमें क्या होता है, सब अलग अलग तरह की फैमिली से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। हर कोई जब एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट। आप एक तरह से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल तो फिर भी एक यूनिट है जहां पर प्रोबेबली सब सेम इकोनॉमिकल रेंज के लोग होते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू द कॉलेज, वहां क्या होता है कि सब लोग अपने आप से डिफरेंट है। हर कोई डिफरेंट फैमिली से आ रहा है, सबका अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अपना है, सबके कन्वेंशनल आइडियाज अलग हैं पेरेंट्स के साथ। ये बच्चे जब क्लिनिक में आते हैं, कई बार अकेले, कई बार पेरेंट्स के साथ, तो मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है कि जनरेशन गैप नोटिस होता है बहुत ज्यादा पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में। कोई बैलेंसिंग नहीं होती और उन्हें समझाना इतना मुश्किल होता है उस बच्चों के कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, आप इनसे बात करिए, ये हमें ठीक से नहीं समझते हैं, ये हमें रोकते हैं, ये हमें आने जाने क्यों नहीं देते। So far said by Dr. Sonia Rawat that they actually get into the casual sex in the parties, and that has become a ritual. Since it's a social platform and you are marking it online also, it's going now, you will get to know gradually of the time every girl or a boy has scored that how many people have they slept with, and if somebody is not having sex in a particular age, 16, 17, 18, other people create so much pressure on them that oh my god, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अब सामने वाले बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि ये सही है या ये गलत है, उसको ये करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी बच्चे ये कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी हो गया है करना। बहुत बार बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि दोस्त बोल रहे थे कि तुमने अभी तक ये नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज, ये फैशन में भी आता है। हर कोई अपनी कंजर्वेटिव फैमिली से आ रहा है या लिबरल फैमिली से आ रहा है। ड्रिंकिंग हैबिट्स एक बहुत नॉर्मल चीज बन चुकी है। देयर आर सम पेरेंट्स जो अलाउ करते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलेज की पार्टीज में अगर देखेंगे तो सारी पार्टीज अब रात में होने लगी हैं। व्हेन यू गो टू 90s एरा तो कॉलेजेस की पार्टीज दिन में होती थी, लेकिन अब कॉलेजेस की पार्टी स्पेसिफिकली क्लब में हो रही है और रात में प्लान हो रही है। तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस कल्चर को कि जी आप ड्रिंक्स कर सकते हैं और आप रात में अकेले आपको घर वापस जाना होगा अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब इसमें बच्चे झूठ बोल कर आते हैं, इसमें बच्चे और भी वो चीजें करते हैं जो उन्हें पेरेंट्स से छुपानी होती है। तो ये पीयर प्रेशर ही तो हुआ ना, जिससे उनका पूरा लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है। ये जो मूड स्विंग होता है खास करके लड़कियों में पीरियड के दौरान, ये बहुत कॉमन है या ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, सिम्टम हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ये मूड स्विंग्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के टाइम की वजह से होते हैं। उस स्पेशली बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि पीरियड से पहले इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, रोना आता है या गुस्सा आता है। सो इट्स वेरी वेरी कॉमन। देयर इज नथिंग दैट इज there is nothing that one has to really worry about until one feels कि it is unmanageable और बिल्कुल भी इमोशंस को होल्ड करने की क्षमता नहीं रहती है। और अगर ऐसा है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ कि आपको ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये आपके पीरियड से कितने दिन पहले आता है, और इसको मैनेज करना विद अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग के माध्यम से बहुत ज़रूरी है।
आमतौर पे देखा जाता है कि अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में कोई हादसा होता है, कोई ट्रॉमा होता है उसके साथ, तो ये जीवन भर उसका पीछा करता है। क्या ये सच है कि जीवन भर ये ट्रॉमा पीछा करता है, और करता है तो किस हद तक उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, और इससे बचाव के क्या उपाय? आई थिंक सबसे पहली चीज है कि ट्रॉमास कि सेटबैक्स या ट्रॉमा सभी को आते हैं लाइफ में एट सम पॉइंट और दी अदर, और उन एक्सपीरियंसेस को कैसे हैंडल किया गया है और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो एडोलेसेंट या बच्चा या अडल्ट कैसे उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया उस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको वो उस टाइम पे कैसे मैनेज हुआ है उसी से आगे वो कितना इम्पैक्ट करेगा लाइफ में, काफ़ी उसके बेसिस पे काफ़ी निर्भर है। पर जैसे बहुत सारे लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और पीरियड्स एंड ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी से भी जुड़ा है कि हेल्दी ओपन स्पेसेस बनाना एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो जाके ये सब बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, आर यू मैरिड? एंड अगर मैं एक 18 या 19 या 17 ईयर ओल्ड की लड़की हूँ और मैं आई कैन बी गोइंग फॉर एनी प्रॉब्लम, but the first question is, are you married? If that is the question, I will not go again. So ye questions are very unsafe questions. The question you're married, not married, उससे आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अब बिल्कुल भी उन पे निर्भर नहीं है, प्रेगनेंसी उन पे निर्भर नहीं है, आपके पीरियड्स उन पे निर्भर नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैन बी मतलब थोड़ा पार्क ऑन द साइड। आपका जो संगठन है, जब आप महिलाओं के बीच जाती हैं, हमने देखा है कि पुरुषों में और घर के गार्जियन के अलावा जिनको पीरियड हुआ है वो भी खुद ही परहेज करती है, वो खुद ही इसको गलत मानती है, किचन में नहीं जाना। आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? चैलेंजेस मतलब सबसे पहले जैसे आपने ही आई थिंक आंसर दे दिया कि खुद से ही सबसे पहले फील करना कि हम खुद ही इम्प्योर है, राइट। ये जो प्योरिटी वाला कंसेप्ट है ना कि मासिक धर्म के दौरान हम कुछ चीजों को छू नहीं सकते। हम बहुत सारे कल्चर्स में, मैं असम से आती हूँ तो असम में कल्चर डिफरेंट है कि जैसे अचार नहीं छूना है। अचार का आई थिंक ऑल ओवर इंडिया एक कंसेप्ट है कि अचार नहीं छूना है। कोई बोलते हैं कि बच्चों को नहीं छूना है। फिर घर में जैसे अलग घर में रहने के लिए डाल देते हैं, जैसे छोटा सा घर नेपाल वगैरह में छोटा सा घर बना के वहां पे रख देते हैं, और वो बहुत अनहाइजीनिक होता है कंडीशंस, राइट। और उस टाइम पे एक ही चीज चाहिए होता है, वो है हाइजीनिक वॉशरूम चाहिए, हाइजीनिक टॉयलेट्स चाहिए, राइट। तो वही नहीं मिल पाता है जो बेसिक होता है, और बाकी सब कुछ से तुम उसको अलग करके रखो। एक रूम में रहना है। बहुत लोग बोलते हैं कि किताब नहीं पढ़ना है उस टाइम पे, मतलब ऐसे पता नहीं कौन सी मेडिटेटिव स्टेट में रहना है ताकि पीरियड्स के दौरान, बिकॉज वो इम्प्योरिटी का कंसेप्ट। तो ये जनरेशंस चलता आ रहा है। तो अगर मैं एक औरत हूँ और मुझे पीरियड्स हो रहा है और मेरी मम्मी ने भी वही प्रैक्टिस किया है, तो वो तो मेरे अंदर भी आएगा ना। तो जब तक आके कोई मेरा काउंसलिंग नहीं करेगा, अगर कोई जब तक आके मुझे नहीं बोलेगा कि आप इम्प्योर नहीं हो, तुम इम्प्योर नहीं हो, तुम ये काम कर सकते हो। तो और हमेशा ये देखना कि किसी फैमिली में मैक्सिमम टाइम्स हम लोग क्योंकि अपने पापा से बात नहीं करते, भाई से बात नहीं करते पीरियड्स के बारे में, जो ये बाउंड्रीज है कि तुम्हें पीरियड्स में यहीं पे रहना है, लड़कों से बात नहीं करना है, खेलना नहीं है, ये सब चीजें हमेशा घर की औरत से ही आती है, राइट। हमारी मम्मी से आ गई, हमारी दादी से आ गई, हमारी चाची से आ गई है। तो ये सब चीजें यहीं से आती है सबसे पहले। तो ऑब्वियसली हम भी उस सिस्टम का ही पार्ट है ना, हम उस कम्युनिटी का पार्ट है। तो हमारे अंदर भी वही वैल्यूज है जो हमें दिया जाता है बचपन में। तो उसको अनलर्न करने का जो प्रोसेस है वही चैलेंजिंग है।
एडोलेसेंट में खासकर लड़कियों में एक बड़ी समस्या है जो पीरियड से संबंधित है, क्योंकि पहली बार वो इसका अनुभव करती हैं। तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है पीरियड से जुड़े इस एज ग्रुप में? प्रॉब्लम सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है नॉट बीइंग अवेयर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि प्रोसेस क्या होता है वही हमें पता नहीं होता है, वही बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसमें इसके बाद ये होता है कि जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये प्रोसेस क्या है, क्यों हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैसे हम जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है उसको हम कैसे यूज करें, वो उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो इन सब चीजों के कारण बहुत सारा शेम एंड मिसकंसेप्शंस है वो डेवलप करता है इंसान में, जो नॉट ओनली जस्ट सोशली उनको इम्पैक्ट करता है बट ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ। जैसे कि अगर वो लोग क्लीन कपड़े नहीं, अगर कोई कपड़ा यूज कर रहा है वो क्लीन नहीं यूज कर रहे क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि कैसे यूज करना है, तो इसके कारण इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसके कारण बाकी बीमारियां हो रही है। तो वो इनफैक्ट उनको ऐसे तरीके से उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो आई फील दैट मतलब मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जो एडोलेसेंट लड़कियों को नहीं पता होता है, एंड इनफैक्ट एडोलेसेंट लड़कों को भी मतलब लड़कों को तो पता ही नहीं होता है, बहुत कम लड़कों को पता होता है। तो दिस ऑल्सो इनफैक्ट इम्पैक्ट्स जो क्लासरूम का डायनामिक्स होता है, कि कभी किसी के स्कर्ट में स्टेन दिख गया तो उस पे कैसे रिएक्ट करना है वो हमें पता नहीं है, वो लड़कों को पता नहीं है। तो इसी के थ्रू एक कल्चर ऑफ शेम डेवलप होता है क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के बाहर। तो आई थिंक प्रॉब्लम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मतलब शुड स्टार्ट विद द सॉल्यूशन शुड स्टार्ट विद अवेयरनेस एंड देन क्रिएटिंग एक्सेसिबिलिटी, एंड उसको हम कैसे लेके जाएं। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों से एक बात तो साफ है कि एडोलेसेंट को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के बजाय साइंटिफिक दलीलों से उन्हें बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, और ये काम हेल्थ एक्सपर्ट बेहतर ढंग से कर सकते हैं, शायद पेरेंट्स से भी बेहतर ढंग से। तो आज का ये एपिसोड इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी उपयोगी है, ताकि जनरेशन गैप की बाधा को दूर कर रिश्तों में संतुलन बनाया जा सके। नमस्कार। Thank you. I think it was one of the boldest Health Nama episode on adolescent health, which we covered in our last episode. And now we come to our new session. All our esteemed panelists are on board. I would request the admin to play the intro video. Admin, can you play the intro video, please?
Thank you. Welcome back. I am Dr. Swadeep Srivastava here, representing Heal Foundation. I have been a public health crusader, and this show is also about various public health issues what we cover from time to time. So this episode, I would like to introduce the episode and our esteemed panelists. Episode is this is also the immunization week. So protecting infants and children post-COVID, current scenario and way forward. On panel, we have today our distinguished panelists. I have with me my co-host, Mr. Kishore Malviji. Our distinguished panelists is first we have Dr. Ranjan Ramani. He is currently working as senior consultant and head neonatology and pediatrics, Apollo Cradle and Children's Hospital in Greater Noida. Welcome, Dr. Ramani. Welcome to our show of Health for All. We have with us Dr. Bilal Khan. He's a pediatrician and has experience of 10 years in this field. He is member of Delhi Medical Council. Some of the services provided by the doctor are childhood infections, health checkup, pediatric vaccination, immunization, pediatrics, chest and child development disease treatment. Welcome, Dr. Bilal Khan, on this show, Health for All. We have with us our third panelist, Dr. Alok Kumar Singh, is an internal medicine specialist in Noida with an experience of over 6 years in this field. Welcome, Dr. Alok. So with this, I would like to give a brief introduction from a report, what I read just recently on the Living with the COVID certificate. I would just like to take 2 minutes to introduce. COVID cases are on the rise in Delhi, National Capital Region and Maharashtra. The spike likely driven by the XC variant should not derail resumption of normal activities. Learning to live with COVID must be more than a mantra. Government of India should institute a robust precautionary regime to minimize possibilities and transmission. Vaccination is the most effective precautionary measure. With 61% of the eligible population fully vaccinated, it is likely that the rapidly transmitting XE variant will have mild manifestation in most cases. The vaccination protocol for the remaining 39% of the partially vaccinated or unvaccinated must be stepped up. To minimize the spread, Government of India must adopt a system requiring people to demonstrate that they are vaccinated or not infected. The European Union Green Pass based on vaccination or COVID-19 test, RT-PCR or rapid test remain the gold model. Remains a good model. India already has a system of vaccination certificates. Presenting them to access public services and spaces should not be a problem. The partially and not vaccinated will present test results certifying their COVID negative status. For the certificate, the government must recognize the cheaper and easier rapid antigen test as an alternative to RT-PCR with a shorter validity period. Tests must be administered by authorized centers, which will upload the result to the Health Ministry to generate test certificate. With the certificate, people can access public spaces and services, allowing safe resumption of activities, as said by experts to mask mandate, and the mask mandate should be reimposed. So, setting this background on vaccination certificates, which should be made almost mandatory in the public domain, and also that the point coming out now regularly today only, the Economic Times first page report says experts agree on masking up and ventilation. So with this, I will hand it over to Kishorji for his set of questions on this today's session, which is not only on COVID vaccination, it is on overall infant child vaccination. Over to you, Kishorji, for your set in questions starting. Thank you, Swadeep जी. इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और अपने गेस्ट से सवाल जवाब करूं, कुछ बातचीत करूं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा ये शो हेल्थ फॉर ऑल दुनिया भर में YouTube और Facebook पर लाइव देखा जा रहा है और काफी रिस्पांस भी आ रहे हैं हमारे पास. मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालों में से कुछ सवाल शामिल करूं और आपसे पूछूं. मेरा पहला सवाल डॉक्टर रंजन रामानी से है. डॉक्टर साहब, एक विवाद बहुत चल रहा है आजकल, चर्चा में बहुत है. स्कूल खुले हुए हैं, कोविड का नया वेरिएंट स्कूल तक पहुंच गया है, पेरेंट्स डरे हुए हैं, टीचर्स घबराए हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि स्कूल खुले रहेंगे. सरकार इस पसोपेश में है कि स्कूल बंद करें या खोलें. एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय है. ज्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है पहले ही, तो बंद करना कोई फायदेमंद नहीं है. एक डॉक्टर के नाते आपका क्या कहना है इसमें, क्या राय है आपकी?
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो जहाँ तक कोविड का सवाल है, लास्ट 2-3 साल में हमने देख लिया है कि बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, आगे भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते रहेंगे। सिवियरिटी में चेंजेस आई है, जो सेकेंड वेव हमारा था वो बहुत सिवियर था, सो कॉल्ड थर्ड वेव जिसे हम कह रहे हैं वो उतना सिवियर नहीं था। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो भी बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं, बहुत सिवियर नहीं आ रहे हैं। हमारे लिए चैलेंजिंग तब होता है जब हमारा जो हॉस्पिटल है इट स्टार्ट्स गेटिंग फिल्ड अप, जब अस्पताल भरने लगते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज जब फिलअप होने लगती है, तब चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। सो माइल्ड इलनेसेस में मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, बच्चे को अगर दिक्कत होती भी है डॉक्टर से मशवरा करके वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। सो मेरे हिसाब से अभी जो करंट सिनारियो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कूल बंद करना या बच्चों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करना या उन्हें बाहर नहीं जाने देना ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और जैसा पहले भी एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि हमें कोविड के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी, हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कहाँ पे हमें ज्यादा एक्टिव होना है। कुछ अगर ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे केसेस सीरियस हैं, या कुछ एक एज ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो कि वल्नरेबल है, जिनको हार्ट लंग के किडनीज की दिक्कत है, जिनमें सीवियर इलनेस के चांसेस ज्यादा है, ऐसे बच्चों को हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा, उनको ज्यादा केयर देनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो आमतौर पे जो रिसेंट ट्रेंड है और अब जो कह रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, मैक्सिमम केसेस में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सरकार ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन रोल आउट किया हुआ है 12 साल के ऊपर, और उम्मीद है आने वाले समय में 5 साल के ऊपर भी रोल आउट करेंगे, जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी हो रखा है। सो यही तरीका है, यही वे फॉरवर्ड है कि हम वी बिकम यूज टू, हम इस वायरस के साथ रहने की आदत डाल लें। और उसका दूसरा एक एस्पेक्ट है ये कि अगर हम बच्चों को स्कूल ना भेजे, उनको घर पे रखें, तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है जो हमने देखा है कि लास्ट 2-3 साल में वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। सो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जनरेशन है ये आगे चल के वो किसी तरीके की एक डेवलपमेंटल इश्यूज में फंस जाए, ये भी हमें देखना है। तो उनको जो उनकी अपॉर्चुनिटीज है वो देनी बहुत जरूरी है। और स्कूल में जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, अपने एज ग्रुप के बच्चों से मिलते हैं, सोसाइटी में खेलते हैं, बाहर जाते हैं, ये बहुत जरूरी है और ये एक डेवलपमेंट का बहुत ही जरूरी अंग है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सो कोविड एक भाग है हमारे लाइफस्टाइल का, आज बन चुका है। लेकिन इसके साथ ये भी अप्रिशिएट करना, इस बात को भी महसूस करना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल विकास बच्चों का वो कहीं थम ना जाए, और दोनों को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो स्कूल बंद कर देना मेरे हिसाब से सिर्फ एक सुझाव तो नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, ऐसी जरूरत आ पड़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे शो में डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी और एम्स के प्रोफेसर संजय कुमार राय, ये दोनों आए थे। इन दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए, न कि मास वैक्सीनेशन। तो ये 5 साल के बच्चों को और 5 साल के बच्चों से ऊपर को, जिनके बारे में कहा जाता है कि नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या इसमें वैक्सीनेशन की जरूरत है, जैसा कि अभी आपने कहा? सो इसमें एक्सपर्ट्स डिफर करते हैं, नो डाउट देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। जो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि क्योंकि बच्चों में साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं कि जब बीमारी होती है, सो कोविड इन्फेक्शन वायरस से जितनी प्रॉब्लम होती है उससे ज्यादा और प्रॉब्लम उसी के बराबर प्रॉब्लम तब होता है जब बॉडी हमारा रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। तो बच्चों में ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसलिए बच्चे जनरली कोविड बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। एंड मैक्सिमम केसेस में, जैसे मैंने बताया, कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड समय के साथ बच्चे ठीक हो जाते हैं, रिकवरी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस कम है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर कुछ सबसेट ऑफ बच्चे जो कि बीमार हैं, जो जिनको किसी तरीके की दिक्कत है, वो सीवियर इलनेस के प्रभाव में आ सकते हैं। बहुत बारी बहुत सारे केस रिपोर्ट्स भी आए हैं कि बच्चों में खास के एक सघन बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं MIS, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन, जो कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि किस बच्चे को हो सकती है। तो नॉर्मली जब कोविड होता है उसके 2-3 महीने बाद बच्चा वापस अस्पताल आने की स्थिति में आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर। सो ये सारी चीजें बच्चों में अमूमन देखने में मिलती हैं। सो अगर हम बाहरी विदेशी कंट्रियों की बात करें, तो उन्होंने 5 साल के ऊपर वैक्सीनेशन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी अलाउ कर दिया है।
हमें अपने डेमोग्राफिक के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सारे बच्चों के रोल आउट करना चाहते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक बच्चे हैं पहले जिनको की हार्ट लंग किडनी के या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ग्रसित है उन पे रोल आउट करना चाहते हैं। सो ये तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोविड ऐसे भी हम बच्चों में फ्लू की शॉट्स जो है 6 साल 7 साल तक, अगर आप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें तो फ्लू के शॉट्स जो होते हैं वो वैसे भी हम 6 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों में देते हैं, ताकि वो जो गंदे वाले जो खराब तरीके के फ्लू होते हैं उनसे भी वो मुकाबला कर सके। तो मेरे हिसाब से अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम फोकस्ड वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते हैं रादर देन गोइंग कि हम यूनिफॉर्मली सारे बच्चों को दे सके। स्पेशली हमें उनको जरूर ध्यान देना होगा जो कि बीमार हैं, जिनको जन्म के समय कुछ दिक्कत हुई थी या आगे चल के वो ऐसे कुछ बीमारी से ग्रसित है, तो उन पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा एंड धीरे इन स्टेजेस फिर हमें धीरे धीरे उसको रोल आउट करना पड़ेगा। डॉक्टर बिलाल खान, क्या आप अपने अनुभव से बताएं कि अभी जो नया वेरिएंट आया है, सॉरी आप अपना सॉरी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा आप दोबारा क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि आप अपने अनुभव से बताएं कि इस समय जो नया वेरिएंट आया है उसके शिकार छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे क्या आ रहे हैं आपके पास, और खास करके इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी, इनमें कितना ये इन्फेक्शन हो रहा है? देखिए इन्फेक्ट तो ये कर रहे हैं 5 साल से छोटे बच्चों को भी, और जो आपने बात की इन्फेंट्स यानी कि जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें भी। थोड़ी सी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है क्योंकि मैं यहाँ पर पीआईसी का इंचार्ज हूँ, तो जो एडमिट हुए हैं उसमें अभी तक हमने 2 बच्चे एडमिट किए हैं अभी रिसेंट इन लास्ट 1 मंथ, और दोनों ही जो बच्चे एडमिट किए हैं वो 1 साल से कम वाले बच्चे एडमिट किए हैं। और चूंकि आपको ये समझना होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो सांस की नली होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उस पर जरा सा भी कुछ एक स्वेलिंग ट्रिगर अगर होगी तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर ओल्डर पॉपुलेशन, जिसमें चाहे बड़े बच्चे हों या एडल्ट हों। तो दोनों ही बच्चे एज ए ब्रोंकियोलाइटिस करके वो एडमिट किए थे हमने, और लेकिन जो 2 बच्चे हमने एडमिट किए वो दोनों ही बहुत अच्छे से रिकवर हुए। दे रिक्वायर्ड अराउंड 2 to 3 days ऑफ स्टे इन पीडियाट्रिक आईसीयू। तो ये तो है जो लेस देन 1 ईयर का है कि लेस देन 1 ईयर के हमने 2 ही बच्चे लेके दोनों को हमें एडमिट करना पड़ा। लेकिन जो उससे बड़े बच्चे हैं जो 1 से 5 साल की एज में है या 5 साल से बड़े बच्चे हैं, तो केसेस तो हैं, और ज्यादातर केसेस जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ही हैं कि उन्हें बस थोड़ा बहुत नजला, खांसी, जुकाम और बुखार इस कॉमन सिम्टम्स के साथ आते हैं। वो ओपीडी से अगर हम टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज उन्हें और किसी सपोर्ट की ऐसा जरूरत नहीं होती है, तो जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर वो ठीक हो जाते हैं और घर में रहे। हम ज्यादातर उन्हें घर में रहने की सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने किसी स्टडी में पढ़ा था कि जो प्रीमेच्योर बेबी हैं और जो लंग इन्फेक्शन के साथ पैदा होते हैं बच्चे, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो इसका कोई प्रिवेंशन है, कोई रेमेडी है? देखिए एज सच कोई ऑब्वियसली अगर किसी को कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज है, और चाहे जिस तरीके से डॉक्टर रमणी रंजन ने कहा कि उन्हें कोई और बर्थ के टाइम पे मान लिया कोई कार्डियक डिफेक्ट है, या और उन्हें कोई किडनी इश्यूज हैं, या उनके लिवर इश्यूज हैं जो चल रहे हैं ऑलरेडी, और उसके ऊपर कोई और बॉडी पे अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है, कोई भी अगर अटैक होता है किसी वायरस से, तो वो उनके जो फाइन लाइन बैलेंस है उनको वो डिस्टर्ब कर सकता है, और डेफिनेटली वो ज्यादा सिक हो सकते हैं और उनकी जो आउटकम है तो वो थोड़े खराब हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द अदर जो बिल्कुल हेल्दी ऑर्गन है जिन बच्चों के। आप इसमें बात कर रहे हैं जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं जिनके लंग्स में इश्यूज होते हैं, और वो लंग इश्यूज के साथ में अगर आगे वो बढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी आप ये समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी 100% लंग कैपेसिटी के साथ नहीं जी रहे हैं, तो ऑलरेडी वो आइदर जो भी आप कहें कि इसमें 80% लंग कैपेसिटी के साथ, 60% के साथ, 40% के साथ दे सर्वाइविंग, ठीक है। और ये जो वायरस है ये प्रीडोमिनेंटली ये आपके लंग को इम्पैक्ट करता है, तो जो भी रिमेनिंग लंग पार्ट है अगर कोविड की वजह से इम्पैक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो लेकिन इसमें क्या कोई रेमेडी है? आई थिंक उसके लिए रेमेडी जो हम पहले बात कर चुके हैं वो वैक्सीन ही है। खासतौर पे शायद हो सकता है कि बच्चे वो अभी 12 साल से कम हो वो बच्चे, तो उनके लिए तो वैक्सीन नहीं है, बट एटलीस्ट जो अदर पॉपुलेशन है
जो उससे बड़े बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ रहे हैं, या जो एडल्ट हैं जो उनके आसपास रहते हैं, शायद वो सभी लोग अगर अपने आप को वैक्सीनेट कर लें और वो वैक्सीन जो वायरस को शायद उतने स्प्रेड ना करें आसपास, जो बाकी जो हम प्रिवेंशन लेते हैं जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो खासतौर पे ऐसे बच्चों के साथ जब आप रहते हैं तो स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उनको अननेसेसरली इस प्रॉब्लम में वो लैंड अप हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप और डॉक्टर रमानी रंजन दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम फिर दोनों के पास लौटेंगे। और डॉक्टर आलोक सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी कल एक सर्वे रिपोर्ट आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट आई है, वो थोड़ी अजीब सी लगी हमको रिपोर्ट। उसमें ये कहा गया है कि इम्यूनिटी का संबंध कास्ट से भी है, और जो अपर कास्ट हैं वो 4 से 6 साल ज्यादा जीते हैं बनिस्बत की SC ST। एक फिजिशियन होने के नाते आपको इस तरह के सर्वे में कोई दम लगता है? मुझे तो जैसा कि आपने बताया कास्ट वाली बात, मुझे इसमें रिवर्स लगता है। मतलब मुझे इसके जस्ट अपोजिट फील होता है। जैसे डेल्टा वेरिएंट जब हमारा आया था तो उस टाइम आई थिंक लोअर स्ट्रेटा में कम मॉर्टेलिटी थी रादर देन अपर स्ट्रेटा में। तो कास्ट सिस्टम वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सोचिए इम्यून सिस्टम लोअर कास्ट में बेटर होती है, एक्सपोजर बेटर होता है रादर देन अपर कास्ट। आप देखिए कि अपर स्ट्रेटा में जल्दी लंग्स अफेक्टेड हो रहे थे, सारी चीजें, मॉर्टेलिटी वगैरह ज्यादा थी रादर देन लोअर कास्ट। तो मुझे इसमें कोई दम नहीं लगता। आई डोंट एग्री विद दिस सर्विस। आप अपने अनुभव से बताएं कि आपके हॉस्पिटल्स में जो केसेस आ रहे हैं इस समय, उसमें बच्चों के केसेस के कितने संख्या है, कितने प्रतिशत हैं, और उनमें क्या कॉमन सिम्टम्स पाए जा रहे हैं या बिना सिम्टम्स के? मैं पीडियाट्रिशियन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे यहाँ बच्चे एडमिट हो रहे हैं, 12 साल के कम बच्चों की बात करें हम, तो बच्चे एडमिट तो हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंजाइटी, लेकिन कोई भी सिवियरिटी नहीं है। 1-2 बच्चों को बस थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जैसा कि मेरे पीडियाट्रिशियन से बात हो रही थी, तो 1-2 बच्चों को ही बस ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, 2-4 बच्चों को आउट ऑफ 50-60। तो उसमें भी नेबुलाइजेशन एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड ब्रोंकोडायलिटिस वगैरह देने के बाद बेटर है। कोई भी सिवियरिटी एज सच नहीं है कि सैचुरेशन लेवल डिप नहीं हो रहा है, कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात अभी तक नहीं आई है इस वेव में, अगर बात की जाए तो। मेरा ये सवाल इसलिए भी था कि इस समय साधारण फ्लू भी बहुत फैला हुआ है। जी। आपके हॉस्पिटल में जब लोग आते होंगे तो उसको आप सिम्टम्स लगभग बराबर ही है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जी, जैसा कि जी हम लोग RT-PCR तो कराते हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, हम कोविड टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन जैसा कि एम्स का गाइडलाइन है हम उसी को फॉलो करते हैं सारे लोग। तो उसमें जब फ्लू जैसे सिम्टम हो तो हम लेवल 1 की ट्रीटमेंट ही उनको देते हैं, फ्लू की तरह ही ट्रीट करना होता है, इवन इफ इट इज कोविड हो तब भी हमें फ्लू की तरह ही ट्रीट करना है। अगर ऑक्सीजन लेवल डिप होना शुरू होता है, ब्रेथलेसनेस शुरू होती है, तो उसको लेवल 2 की तरह ट्रीट किया जाता है, और लेवल 3 मतलब बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन लेवल हो जाए, बहुत सीवियर हो जाए, वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़े तो लेवल 3। लेकिन हमें लेवल 1 पेशेंट जो कि फ्लू की तरह ट्रीट करना होता है, इवन इन कोविड ऑल्सो, तो हम इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ही कोविड में भी ट्रीट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर आलोक सिंह, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे सेकंड राउंड में। अब आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव। ओवर टू यू डॉक्टर स्वदीप। थैंक यू किशोर जी, प्लीज स्टे विद अस। हमारा एक वी हैव गॉट अ सीरीज ऑन wellness called Wellness Matters. We have started every Thursday, and this Thursday was first episode. We are playing a 1-minute video of the experts in between. I would request that before I start my conversation in the second round with the experts on the panel, I request my admin to play 2 videos from that Wellness Matters by IHL Care series. Admin, play the Wellness Matters 1-minute videos.
obesity, as he said, does not set in overnight. It's a gradual process. So as a nutritionist and as a wellness expert, would you actually go in for a harsher message of, say, banning fast foods, say, in schools and in workplace, especially in the IT sector? Your thoughts? हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं तो I can pass a law पूरी तरह से. You know, I'd love to pass a legislature which does not allow sale of any form of packaged food, especially where there are children involved, because you're shaping up the future of a country, of a planet with something which definitely is not needed in their lives. Having said that, it is not so simple. We understand that there is a lot in that ecosystem that needs to be taken care of. However, what went wrong, I think, Shankarji, is that the communication that we need to do with our children at the level of going to their intelligence is not happening properly. A lot of advertising, a lot of perception building, a lot of things that are being told to people who are impressionable minds has not been the right things that should have been told. And therefore, I think we have an opportunity to go and actually talk to our people, our children, at the level of where they can understand and make them, sort of do small sessions with them, do small activities with them, take them back and let them make their own intelligent choices. Can we also play the next video? Just 1 minute video. Admin. What is your view on wellness? That we need to understand that we give lots of lecture, we listen or hear so many lecture or discussion about wellness and health. But actually we need to understand whether the person to whom we are delivering lecture is ready to understand. For this thing is very important to make them understand that mindfulness is very important in life. You are supposed to live in the present. आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने present में जिए और देखिए आपके surrounding में क्या हो रहा है. Wellness is not only our physical health. Like our previous speaker has mentioned, wellness has 8 aspects. So हमें समझना है मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ. और ये मन स्वस्थ और तन स्वस्थ कैसे रहेगा जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि this मन स्वस्थ और health is very important for our life. We have only one life, and that too we all are limited edition. But we are not very clear or not very focused what we are looking for. Today people are believing in doing well rather than being well. So they are just running behind everything without focusing on what actually they are looking for. After certain age, they feel that now everything has gone. They have earned lots of wealth, but that wealth is of no use. So we need to make them understand, our present generation, the importance of health. Thank you so much. Coming back to Dr. Ramani, you are practicing towards Greater Noida and Noida Expressway, where we have got maximum number of schools, and the biggest panic among mothers is that, and the point of discussion also amongst the family is always that, even my daughter studies in one of the schools there, is that कि कोविड केस आया क्या, किस क्लास में आया, अच्छा उस क्लास में आया, वो बच्चे को was he asked to not come to school, what are the schools doing, क्या हमें बच्चों को भेजना चाहिए, is it safe? So this is the current point of discussion, particularly
in the scenario when we are in the process of getting vaccination for kids done above 12 years. I think a lot of kids in metros have gone for vaccination, and that's a beautiful drive which is going on, but it's still below 12 years. Today only the panel had recommended vaccine Covaxin for 6 to 12 years. Probably they have recommended, so it will take maybe a month's time to actually come on the floor and get distributed. So this scenario, what is, and the biggest panic, as you know, is always among the mothers. So what is your message to the mothers, particularly in the scenario where you are already practicing in one of the leading centers in that side, near the schools, among the schools, and what are you seeing in front of you in your daily practice? Right. Thank you, Dr. Swadeep, for the question. So it's a very, I would say, happening question nowadays. You have rightly pointed out. So if we see the history of COVID in last 3 years that we have gone through, if you see that first wave when it was there, it was quite a panic, isn't it? People were so afraid, not getting out of homes. Agar kisi ko COVID ho jaye, he became like someone untouchable. It was the situation. Second wave, yeah, we had a lot of mishappenings. People died, mortality was high, and then came the third wave where cases were quite high, but then mortality was less. People were getting less affected. So this is the natural history of progression of any epidemic or pandemic, you can say. So looking at the current data, I think we are moving towards in a state where we are going to be in harmony with this virus. और इस चीज को हमें accept करना पड़ेगा. लोगों के अंदर भी जो panic थी, वो पहले से कम हुई है. There is no doubt. Panic है अभी भी. People are still quite aware and afraid of COVID infections. But yeah, the way, the mentality, the thought process, the overall response has improved over a period of time. People have started understanding कि भाई नहीं, COVID जो है भाई शायद जीवन का एक अंग है और रहेगा. हाँ, बच्चों की जहाँ तक सवाल है, we are little more concerned because we feel that kids are not vaccinated, adults vaccinated है, we can deal better. But having said that, जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चे चूंकि उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वो इस बीमारी से बहुत अच्छा फाइट करते हैं और बहुत रेयर केसेस में हमें अभी देखने में आया है किसी बच्चे को बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम भी है. सो मदर्स कंसर्न है एंड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि भाई जो बच्चा अफेक्टेड है उससे हमें ट्रांसमिशन कम हो तो वो बच्चा स्कूल ना जाए, या स्कूल अथॉरिटीज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी बच्चे को अगर सिम्टम हो, देयर शुड बी अ क्लियर कट गाइडलाइन कि whoever is suffering from good bout of cough, fever, cold, he should skip school for few days. That is absolutely fine. और जहां पॉसिबल हो, जहां पर सब संभव हो कि मास्किंग की जा सके, लाइक बड़े बच्चे जो 5-7 साल के ऊपर के हैं जहां मास्किंग संभव हो वहां पे कर सके. लेकिन वरी नहीं करना है. आई थिंक हम लोग इस स्टेज की तरफ जा रहे हैं जहां हमें हार्मनी बनानी पड़ेगी इस वायरस से. एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि जैसे जैसे और डेटा आ रहा है, जैसे जैसे बीमारी के बारे में हमें पता चल रहा है, नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, सो द कैपेबिलिटी टू फाइट दिस वायरस इज इम्प्रूविंग. वी हैव न्यू मेडिसिन, वी हैव वैक्सीन रोलिंग आउट, न्यू इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग, सो मोर एंड मोर डेटा. फर्स्ट वेव में हमारे पास डेटा नहीं था, वी वर क्लूलेस, क्या करना है क्या इसके साथ, वी डिडंट नो. सेकंड वेव, या वी वर बेटर बट देन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. तो सिमिलरली जैसे जैसे समय जाता रहेगा, वी विल बी मोर इन हार्मनी विद द वायरस एंड होपफुली वी कैन डील इट बेटर एंड बेटर. सो नो पैनिक, we should be aware. That's it. I think my such it would be this. Will it be appropriate to give this statement, which a lot of experts, even Dr. Laharia has written in his Times of India edit piece today, that the benefits of opening a school and the kids regularly going to school outweigh the risk involved? COVID risk? Yes. I am absolutely in sync with this, that kids must go to school. सी हमें स्कूल बच्चों को भेजना नहीं है, भेजना है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक, सबसे पहले कि बीमारी की सीरियसनेस क्या है, व्हाट आर वी डीलिंग विद एक्चुअली. नंबर 2, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कितना सैचुरेटेड है, आर वी एबल टू डील विद द सिचुएशन इफ थिंग्स गो रॉन्ग. अगर वी आर हैप्पी कि नहीं, बच्चे जो है वो बहुत अफेक्टेड नहीं है, बहुत माइल्ड से सिम्टम्स है, एंड वी आर हैप्पी, वी हैव गॉट द कैपेबिलिटी, इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग वी कैन हैंडल दैट पॉपुलेशन, then there is no point stopping the schools. But वैसे मैंने पहले भी बताया कि
development is a very important aspect of a growing child, right from infancy till a child becomes adolescent. Development is so important, and we are missing on this part. And let me tell you, and I think Dr. Bilal, Dr. Alok will agree with me as well, कि last few months and years से हमने जो OPD practice देखी है, उनमें बच्चों का development बहुत severely impact हुआ है. Speech delay has been very common. Socialization has been very, uncommon. Children do not want to mix with their peers. Screen time बढ़ गए हैं. So कहीं ना कहीं, we are making a generation which is introvert, which is not right. So एक gaps आ रहा है जो कि handle करना बहुत जरूरी है. So developmental pediatricians and overall every health worker should be aware of this. So it's not just COVID. हमें बाकी aspects को भी देखना पड़ेगा. And as I said, we have to strike a balance between everything. And looking at the current scenario, I think stopping school is no solution at all. So very important point you raised today, the development of kids during COVID. I think we will do a special episode on this because it requires a lot of attention and introspection and analysis that during COVID, what are the various things which have impacted children adversely. And there are many, many things from psychological to mental to physical, cognitive, all sort of developments have been impacted, and that's not good for the society, for the children particularly. And how to cope up with that when things are opening up. And of course, COVID will remain. We have to live with COVID. All experts have agreed. Everybody is now understanding that aspect. So how do we accelerate and overcome those deficiencies which our kids have gone through in last 24 months? And so that everything comes back to normal. So as you rightly pointed out, COVID सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सारी और भी सारी चीजें हैं. तो आई वुड लाइक टू कम टू डॉक्टर बिलाल खान. डॉक्टर बिलाल खान, यू हैव बीन, सर आप अनम्यूट कर लें. हाँ, यू हैव बीन अ पीडियाट्रिशियन. आप भी नोएडा एरिया में प्रैक्टिस करते हैं. सो डॉक्टर खान, आपके प्रैक्टिस में मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज एन इम्यूनाइजेशन वीक एंड एज यूजुअल हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं और कोविड से में आ जाते हैं डिस्कशन में और कोविड में अटक जाते हैं. तो एज डॉक्टर रमानी ऑल्सो सेड कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच नीड टू बी taken care of, particularly from the healthcare aspect. तो इम्यूनाइजेशन वीक में अगर आप हमें विस्तार में बता सके इन इंग्लिश और इन हिंदी, whichever language you are comfortable sir, कि हमें क्या क्या इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए पेरेंट्स को अभी भी ख्याल में रखना चाहिए. दे शुड गो फॉर दोज इम्यूनाइजेशन विदाउट फेल एज पर आवर इम्यूनाइजेशन नेशनल गाइडलाइंस. एंड कौन से इम्यूनाइजेशन इफेक्ट हुए हैं कोविड के टाइम में जिनको प्रायोरिटी कम मिली है, एंड उसका क्या असर हो सकता है बच्चों पे? देखिए, ये लॉन्ग हिस्ट्री है. आई थिंक अब हम सब जानते हैं कि 2 सेंचुरीज हो गई हैं कम से कम कि जब से वैक्सीन आई हैं और किस तरीके से वैक्सीन हमारी हेल्प कर रही हैं. इवन आजकल के बच्चों को तो शायद स्मॉल पॉक्स के वो निशान भी नहीं दिखेंगे जो हमने देखे हैं अपने बड़ों में या अपने जो हमारे पेरेंट्स थे या दादा दादी के एज वाले ग्रुप के. ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स पूरा खत्म हो चुका है. आप खुद ही देखते हैं कि इवन पोलियो ने कितना बैडली इम्पैक्ट किया था पूरे वर्ल्ड को. इवन इंडिया में हमारे अभी भी आसपास में आप देख सकते हैं कि जो पोलियो से इम्पैक्टेड लोग हैं वो, ठीक है, तो पोलियो ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया है. ठीक है, थोड़ी सी नेबरिंग कंट्रीज में है अभी भी. ठीक है, तो ये अच्छे से सबको पता है कि भाई वैक्सीन ने किस तरीके से हेल्प करी है जो मतलब जो डेडली डिसीज थी उनके खिलाफ लड़ने में. और लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था. ठीक है, देयर आर एंटी वैक्सीन पीपल और ऑलवेज देयर, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, बट काफी ठीक से चल रहा था. लेकिन इस कोविड के पेंडेमिक ने सबसे ज्यादा जो बच्चों को इम्पैक्ट किया है वो 2-3 तरीकों से, जिसमें एक डिस्कस आप कर चुके हैं कि जो डॉक्टर रमानी अभी कह रहे थे कि किस तरीके से उनकी जो अपनी एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, उनके स्क्रीन टाइम बढ़ गए हैं, उनके जो फूड हैबिट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं. तो उनको ओवरऑल ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, डेवलपमेंटल डिले और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं. साथ में क्योंकि माता पिता जो थे वो सभी बहुत डरे हुए थे और उन्होंने क्लिनिक्स जाना, पहले तो क्लिनिक्स ही बंद हो गए थे. ठीक है, हॉस्पिटल शट डाउन थे नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, सिर्फ कोविड को ही हम एंटरटेन कर रहे थे. फिर धीरे धीरे अगर जब खुला भी तो लोगों में डर नहीं गया. और ये देखने में आता है कि लोगों ने पिछले 2 साल में अपनी बहुत वैक्सीनेशन डिले कर दी है. जो उनकी रूटीन वैक्सीनेशन हैं वो गए ही नहीं है उनको लगवाने के लिए.
या कुछ जगहों पे क्लिनिक्स ने लगाने बंद कर दिए। जैसे स्टार्टिंग में तो ये था कि नहीं, अगर आप वैक्सीन लगाएंगे बच्चा क्राई करेगा तो उससे फिर भी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कोविड कैरियर है तो उससे स्प्रेड हो सकता है बाकी लोगों को। तो इवन स्टार्टिंग में तो रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी कि वैक्सीन पर धीरे धीरे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने ये स्टार्ट कर दिया था, बट जनरल पब्लिक ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने काफी हद तक इस चीज को नकार दिया था। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ तो जिसमें हमारी जो डेडली डिसीज हम बात कर रहे हैं कि डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, ठीक है, और जो टाइफॉइड वैक्सीन हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैं, मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, ये सारी ऐसी वैक्सीन थी जो काफी कंट्रोल में थी ये डिसीज। और सच मैंने अभी इनका कोई ऐसा तो नहीं देखा है कि ये डिसीज कोई ज्यादा निकल करके आ रही है वैक्सीन फेलियर होने की वजह से। बट हाँ, टाइफॉइड और ये चीजें बहुत देखी है कि ये काफी अभी कम अप हो रहा है, बहुत बच्चों को ये चीज शिकायत हो रही है। ओके ओके, तो आपको पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है वैक्सीनेशन को लेकर के? देखिए, मैसेज बहुत क्लियर है कि कोविड के साथ हम सभी को रहना है, ठीक है। शायद जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्फ्लुएंजा के साथ हुआ था, ठीक है। हमने इन्फ्लुएंजा के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ी थी पूरी दुनिया ने, लेकिन इन्फ्लुएंजा को आप बाहर नहीं कर पाए। और आज आप इन्फ्लुएंजा के शॉट लेते हैं या और जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को प्रैक्टिस करते हुए आप उसके साथ रह रहे हैं, सेम ऐसे ही शायद आपको कोविड के साथ करना पड़ेगा। लेकिन जो और प्रूवन डिसीज है जिनसे वैक्सीन बचाती हुई आई है हमें, ठीक है, ताकि हम एक अपनी जो बच्चा है वो अपनी उसकी लॉन्ग लाइफ आगे बची हुई है, जिसको वो अच्छे से जी सके, डिसीज फ्री जी सके और वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, जिससे वो अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को डिलीवर कर सके जो उसके अंदर बेस्ट पोटेंशियल है। आई थिंक उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन है उसको हम बिल्कुल मिस ना करें। जो ऑलरेडी शेड्यूल दिया हुआ है नेशनल जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने या और हमारे नेशनल जो भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसको फॉलो करें और प्लीज कोई वैक्सीन मिस ना करें। Thank you, Dr. Bilal. Coming to you, Dr. Alok Singh, we have discussed a lot about COVID and vaccination and lot of. So, in this whole process, while we are one way accelerating towards universal vaccination for COVID and getting 100% coverage, now we have got child vaccination above 12 years, which is already happening at a very fast speed. Now we have got up to 12 for 6 to 12 years co-vaccine coming very soon. But what in this whole process we neglect and often forget about the COVID appropriate behavior, particularly masking. So now that is something which is we see totally being neglected. Even if I'm not wrong, in your hospital you would be seeing some patients and their relatives coming unmasked, and that is also a possibility in a hospital. I've seen that even they have the courage to take out their mask and walk in a hospital. How about going at the public places? Public places बहुत सारा ये हो रहा है. What is your observation and what is your message for the public in this regard on overall COVID appropriate behavior? And this is not the time to actually lower your guard. This is a time to keep your guard up. Then only we'll be able to come out of COVID. What is your message, Dr. Actually, has everyone. Actually, Dr. Ramani और Dr. Khan ने तो बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया हर एक्सपेक्ट को. जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो वी वर नॉट रेडी फॉर मास्क. एक्चुअली हमने कभी इस चीज को अप्लाई नहीं किया है. हमने अपनी नॉर्मल लाइफ हमारी आज तक सिर्फ 2 सालों से ये हमें मास्क पहनना पड़ रहा है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना पड़ रहा है. तो लोग अडॉप्टेड नहीं है इस चीज के लिए. अब ऐसा कहे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. लेकिन जैसा कि सिचुएशन अभी चल रहा है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि इतनी सिवियरिटी नहीं है. हम डायरेक्ट फोर्स नहीं कर सकते मास्क को. इतना इजी नहीं होता सबके लिए कि दिन भर मास्क पहन के रहें. और मास्क को सही तरीके से लगाना, हाँ ये जरूर है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जहाँ पे रश है, जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हाँ वहां डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि वहां इन्फेक्शन के रेट ज्यादा होंगे. आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो लगाना है. सिर्फ आप जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि गाड़ी के अंदर भी लगाए, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है. आप उतना नहीं फॉलो कर सकते. हमारी नॉर्मल लाइफ भी हैम्पर होती है उस वजह से. हम उस लेवल तक बैन नहीं कर सकते. हम उस लेवल तक अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, हाँ सैनिटाइजेशन भी इतना ज्यादा नहीं यूज किया जा सकता. हाँ अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, कोई इन्फेक्शियस जगह पे जा रहे हैं जैसे कि हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, तो वहाँ सैनिटाइजेशन को भी फॉलो करें. प्रॉपर हैंड वॉश हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में वैसे भी होनी चाहिए. कोविड अप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट बिहेवियर में नहीं है, हमारे तो नॉर्मल लाइफ में होना चाहिए हैंड वॉश, क्योंकि इन्फेक्शन रेट कम, इवन इन टाइफाइड ऑल्सो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है कोविड तक, हमें नॉर्मल लाइफ में इस हेल्दी अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। अब रही बात सिर्फ लोगों को बैन करने के लिए, रूल बनाने के लिए, तो इससे नहीं होगा, सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन से नहीं होगा, लोगों को अपनी हेल्थ पे फोकस करना होगा, खुद भी लोगों को खुद भी समझना होगा इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अब लोग अपनी फायदे अपने नुकसान के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, हमें रूल नहीं बनाने पड़ेंगे। मास्क को लगाने का हमने रूल तो बना दिया था, लेकिन किसी ने मास्क को ढंग से नहीं लगाया था, सबके मास्क नीचे थे, इवन डॉक्टर्स ऑल्सो मास्क नीचे थे, तो उसको आप फोर्स नहीं कर पाएंगे। लोगों को खुद समझना होगा कहाँ हमें मास्क को प्रॉपर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। Very appropriately put, Dr. Alok. It's very you also pointed a pain point wherein कि दिल्ली में आप गाड़ी में चल रहे हैं तो अंदर मास्क लगा के चलिए, अपने गाड़ी में मास्क लगा के, हर चौराहे पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल looking at you like a culprit and कि मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है और चालान काटना शुरू कर देते हैं। I think now we are it is over because recent days I have not seen them coming forward and chalaning. So obviously there is some change in guideline, but yes, masking is important at public places. That is your message, particularly in hospital, high infected areas, and in crowded areas. There it is important. So and हमेशा मास्क लगा के रहना is not possible, particularly जब ये इस तरह का weather, what we have started seeing in April and the heat waves and the temperature rising above normal, उसमें regular mask लगा के रहना possible नहीं है. But then wherever possible in crowded areas, do put mask and follow COVID appropriate behavior. With this, I would like to thank all my panelists and all the respected speakers to spare time on this Sunday and give certain valuable inputs on today's episode. We'll keep interacting, we'll keep talking. We are live on Facebook and our YouTube channel on Heal Foundation, which is getting popular day by day. Particularly our Facebook, Heal Foundation India, is always, every episode has a view going above 50,000 to 1 lakh viewers. So that is something very encouraging. And we have got viewers from across the world who come up with different questions, which we try to pick up in our with our experts and panelists from time to time. And we'll be in touch with all of you and keep inviting you on appropriate topics. With this, I would like to thank again and ask the admin to put the quiz for today, quiz of the day. We can just ask the questions from our viewers. Every time we have a health quiz, we ask one question related to the current topic of discussion. This time the quiz is on. Sir, there is no quiz this time. This is okay. We don't have quiz this time, so maybe we can. So we'll move on to our next session, and which is best of mindful eating, which is related to wellness, nutrition, mindful eating. We have covered this topic for. In many of our episodes, where top nutritionists, wellness experts, they have been coming and educating us on mindful eating, and we have captured the best of those programs and presenting to you in this 15 minutes long video. Physiological impact of eating in a mindful way? How does it affect the human health in a big way? One is mindfulness is actually came from a very Buddhist concept and also a very Indian concept, because it was a ritual. Now, when one eats mindfully, I just to make it a little more interesting, I just got some props. So here is a box of farsan, and if I open it and if somebody starts to eat it just like that, okay, within some time, and especially if I'm watching Netflix or I'm watching Prime, this dabba is over much faster, much before I know it. So I have actually mindlessly finished this without putting any thought to what I'm eating. Vis-a-vis, when one looks at mindful eating, and you asked about the physiological changes,
mindful eating is always eaten with more awareness. So instead of eating it directly from here, I would portion it in a small bowl and then eat it. What this would do is also reduce the quantity of food. Okay, because we know over a period of time when we eat large meals, also the gastric lining stretches and our need for eating more food increases. Okay, so that directly impacts more on the way we eat. So more food eaten is more calories means weight gain. Weight gain we know has a lot of implications, right from high blood pressure to diabetes to a whole lot of challenges. So definitely putting a little thought to eating is very, very important. So another very important thing about eating is that this whole concept of sitting down and taking time out and eating with consciousness allows the physiological system to be correct, so allows the biochemistry to work well, so allows digestion to be a complete process and does not end up in things like, putrefaction of proteins or bloating or acidity, things that we face because we do not eat mindfully. For example, just the fact that I'm not chewing food enough could cause the acid reflux to happen, because it's more like a reflex, because there is the pyloric sphincter literally shuts down, allowing the acid to come back with the food. So eating mindfully also allows physiologically the body to work much better. It also allows the biochemistry to work more smoothly, also allows digestion to happen properly. So micronutrient deficiencies can be taken care of. Gastric discomfort can be avoided. All forms of IBS and acidity that we see so commonly now can be addressed to some extent by only eating more consciously and more mindfully. And like we say that we have 7 types of hungers. We actually eat through all our senses, right? So from our nose, from our eyes, from our hands. So much before the food actually arrives, we've already presumed that, okay, if all our audience just closes their eyes for 30 seconds and imagines your favorite food, your mouth will start salivating. You can almost smell the food, taste the food. So I think eating is a very complex phenomena. We have a lot of organoleptic properties also involved as far as food is concerned. And so when people have an association with food, we have a trained memory, right? और जब इस memory के हिसाब से हम खाते हैं तो that's what makes some dishes eat more and some भी अच्छा ये इतने में ही काम चल जाएगा. So if it's a biryani, I'll eat like a bowl full of it, but if it's dal rice, probably I'll just restrict to a smaller portion. So that is also a lot of emotional eating happens, and I think that's where mindfulness has a huge role to play, especially in the pandemic also. Stress, anxiety, all of these trigger eating behaviors. And I think that is a very important thing, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी mind लगाते हैं, we kind of observe the food, we savor it, we look at it, we admire it, we take a little time to observe the whole food, it has a lot of impact, rather than just gulping down the food. In fact, research studies also बताते हैं कि if the average time a stomach takes to be full is around 20 minutes. But if somebody has gulped food in the first 5 minutes very fast, you don't tend to get full, right? And so that is why people often overeat much more than what is required. We are humans and we are intelligent, and we are a little different from the other species on the planet because we have the ability to intelligently decide what is not right and what is right. And that concept of using good and bad should definitely be translated into our food, because it is one of the bigger drivers of health. And we know that your food is driving who you are as a person in terms of your health. So be extremely conscious of what you put into your mouth and be very sure of whether this is the right thing to eat or not. And that can simply be done by being mindful and conscious of what you're putting into your system. Ageism is a very important thing. So here when we're looking at mindful eating, I'd like to quote a Japanese example. It's called Hara Hachibu. इसका मतलब है कि जब खाना खाओ तो eat only around 80%. Okay, leave 20% for your digestive juices and for better digestion.
And that is why when you look at Japan as a country and some of the islands like Okinawa, their longevity is almost around 120 years to 160 years. And these are all defined as blue zones. Ki jab when they eat mindfully, it automatically leads to a little bit of calorie restriction and a much longer and a healthier life. कई तरह के वायरस अटैक होते हैं, तो इन वायरस अटैक से बचने के लिए माइंडफुल ईटिंग का क्या सुझाव है आपके? जब हम माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करते हैं, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि वाइल्स इम्यूनिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट, हमको इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है, ओके, इट इज अ प्रोसेस. और हर एक का जो एक प्रकृति होता है बॉडी का, द वे द बॉडी रिएक्ट्स टू वेरियस फूड्स इज डिफरेंट. तो जब many foods like yogurt is scientifically इसको देखने जाओ तो they are well accepted and proven that they help in immunity building, but for some other people it may create some film. तो या जिसको बोलते हैं खांसी आना, तो दोनों चीज important है कि while scientific research says one thing, we also need to personalize it or eat these foods mindfully. इम्यूनिटी फूड्स में जब देखने जाओ तो सारे इम्यूनिटी फूड्स, द फर्स्ट थिंग विल बी हाइड्रेशन, तो ड्रिंक इनफ वाटर, वार्म फ्लूइड्स. अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो वार्म फ्लूइड्स लाइक ग्रीन टी है या जिंजर वाटर है या हर्बल होममेड काढ़ा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन एक्सप्लोर द किचन फार्मेसी इन अ बिग वे, क्योंकि हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमको काफी हेल्प करते हैं एंड इट विल हेल्प अस इन इम्यूनिटी. प्रोटीन फूड्स जरूर से इंक्रीज करना है, स्पेशली जो हमारे इंडियन पल्सेस है इसमें बहुत सारे विटामिन है, तो इनको भी हमको माइंडफुली इंक्लूड करना है. व्हेन आई से माइंडफुली, सिंपल थिंग्स लाइक गिविंग मूंग का पानी, ओके, और pulses which are used in a small chila or a soft khichdi, all of these also can give you a lot of nutrients, especially magnesium, B6, B9, जो immunity के लिए बहुत important है. Based on Buddhist practice of mindfulness, it is said that mindful eating is a technique that works to help you enjoy your food while taking the time to appreciate it. Simply setting aside some dedicated time to eat 3 times a day has been found to improve mood, digestion, and even help reduce anxiety levels. Your views, especially when kids, youngsters, and sometimes even families need TV serials in their menu. If you look at the traditional way of eating, we always had a dedicated area where everybody would sit down on the ground. You would close your eyes, pray initially, and then only you would start your meal. So there is a reason, I think, behind why that was done. That was the first step of mindful eating, to forget about everything else and just focus on your food. Be grateful for the food that is in front of you. And as you eat, you have to feel all your 5 senses working on your food. The taste, the smell, the way the food looks, and all these 5 senses, when they're used very well, that's when the right way of digestion happens in your body. So that is what is mindful eating. It's not just gulping down your food in 15 minutes, which is mostly happening nowadays, because you take your dabba to office and you sit down and you have to finish it quickly because you have a meeting next. So that is something that we have to really get back to. Using your 5 senses every time you have your meal, switching off all electronic devices so that there is no distraction, and you're able to understand whether you have chewed your food well, because chewing is the first step of digestion. Unless saliva mixes properly with your food, digestion is not complete. So that is very important. So that's where mindful eating comes in, sir. हमें डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि आप कार्ब्स मत लीजिए या प्रोटीन लीजिए. हमें स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पाती है कि हमें नहीं पता है कि किसमें कार्ब्स है, कौन सा कार्ब्स फायदा करता है, किसमें प्रोटीन हमको कहाँ नुकसान करता है, कहाँ फायदा करता है. तो हमें स्पेसिफिक ये जानना है कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए, क्या फ्रूट्स लेने चाहिए माइंडफुल ईटिंग के तहत. जब हम कार्ब्स के बारे में बात करते हैं, नॉट ऑल कार्ब्स आर बैड कार्ब्स, करेक्ट,
जो एक कैटेगरी है जो बहुत ही सिंपल कार्ब है, जैसे हम शुगर बोले, हनी बोले, जैगरी बोले, राइस है, बनाना है, जो इजीली सिस्टम में अब्सॉर्ब हो जाए। ओके, दूसरे कार्ब्स है विच कम फ्रॉम हमारे धान, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो छिलके के साथ है, जिसमें बहुत सारा रेशा है। तो जितनी भी चीजें जिनमें रेशा है, इनको बोलते हैं हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, क्योंकि जब हम खाते हैं ये पेट में लंबे समय तक रहती है और पेट भर जाता है, जिसके वजह से ये जो ब्लड शुगर स्पाइक है ऊपर नीचे वाला, ये भी कम हो जाता है, बिकॉज इसमें रेशा ज्यादा होता है। तो फ्रूट्स जब हम खाएं, फ्रूट्स को स्किन के साथ खाएं, इसको एकदम से छील के ना खाएं। Eat whole fruits instead of having a fruit juice, क्योंकि जब हम जूस पीते हैं हम उसका जो फाइबर है इसको निकाल के हम फेंक देते हैं। सेम थिंग व्हेन वी आर ईटिंग हैविंग वेजिटेबल्स और अ वेजिटेबल सूप, इसका जो रेशा है इसको हमें रिटेन करना है। जब हम आटा यूज करते हैं, यूज द आटा, डोंट यूज मैदा। जो आटा है अगर हम उसका ब्रांड जिसको चोकर बोलते हैं, चोकर के साथ रिटेन करके खाएंगे, जैसे पंजाबी आटा गाढ़ा आता है, तो इन सब में कार्ब्स होते हैं पर ये अच्छे होते हैं। पल्सेस है, जिसकी स्किन है, इसमें भी बहुत सारा रेशा होता है जो बहुत फायदा करता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स पल्सेस हैं हमारे शुगर लेवल्स मेंटेन करते हैं। इम्यूनिटी के लिए सिंपल शुगर्स जैसे शुगर है, ये एक्चुअली इम्यूनिटी कम करती है और इससे शुगर स्पाइक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल वे टू एक्सप्लेन कार्ब्स, कि जिन चीजों में रेशा ज्यादा है इसको हम अगर इंक्रीज करते हैं तो ये फायदा करता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस ज्ञानवर्धक एपिसोड से आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि हालात चिंताजनक नहीं है, बस सावधानी और सतर्कता से वायरस को दूर रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में शामिल सभी एक्सपर्ट का हम हील फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम अगले रविवार को सुबह 8 बजे मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या बूस्टर डोज लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार, टेक केयर।